First of all, very good evening to all of you, and start kariba. So first current affair of this month is dolphin count surges in Gahirmatha deep in Chilika. Okay, so या पूर्व मते just inform करंतु कि Gahirmatha हमरो को district रे अछि. आरो लोकेशन टा आपन को टास्क रहबो, लोकेशन टी आपन आइडेंटिफाई करबे एपे मैप रे जाय की, एंड आपन को नोट रे गोटे स्मॉल स्केच टे गोटे बनै की आपन तारो लोकेशन टी लिखिबे. Okay, so the population of dolphins in Odisha has increased from 544 in 2021 to 726. Both huge increase. Okay, and revealed that annual dolphin census carried out recently Gahirmatha जोटा it extend from Dhamra जो अपन का जो लोकेशन वाइज हमें जो जीवा ये एक्सटेंड कोटू को करछि ना धामरा रिवर माउथ इन नॉर्थ एंड ब्राह्मणी रिवर माउथ इन साउथ. सो धामरा रहला नॉर्थ पार्ट रे एंड ब्राह्मणी रिवर रहला जस्ट मिनिट हाइलाइटर मु यूज करे. ब्राह्मणी रिवर रहला अपन को साउथ पार्ट रे एंड एटा केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट रे अछि, is home to the state's largest population of dolphins. So हमर जो गुटे प्रायर जो कंसीडरेशन थिला कि चिलिका रे सबटु मोस्ट abundant मात्रा डॉल्फिन्स गुडी को देखिया पय मिले, सेटा नुए गहिरमाथा रे सबटु लार्जेस्ट अमाउंट देखिया पय मिले. देन हमर चिलिका पार्टी आसिला इवन मोर देन चिलिका. And as per 2022 dolphin census, Gahirmatha Marine Sanctuary and nearby areas, just a minute. Okay. So, as per 2020 dolphin census, Gahirmatha Marine Sanctuary and nearby areas in Bhitarkanika saw dolphin count skyrocket to 540 from 342 last year. Means ये बहुत huge quantity रे अंकर जो हमर इंक्रीज होची पॉइंट रिप्रोडक्शन ही की कारण तांकर कूल एंड काम एनवायरनमेंट पाउछंती. ऑब्वियसली सेति पई तांकर इंक्रीमेंट होची सबु माने ईयर वाइज. ओके, गहिरमाथा रे खास करी की एनवायरनमेंट तांको सुइटेबल रहउची. देन सो हमर जो गुटे प्रायर कंसीडरेशन थिला कि ओनली इरावडी डॉल्फिन्स ओडिसा रो चिलिका रे एंड मिले, किंतु इरावडी डॉल्फिन्स छडा भी बहुत सारा डॉल्फिन्स रो स्पीशीज ओडिसा रे देखिया पे मिले, जोटा कि होची हम्पैक डॉल्फिन्स, स्ट्राइप डॉल्फिन्स, बॉटल नोज डॉल्फिन्स एंड स्नाइपर डॉल्फिन्स. सो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस रहउची आपन को प्रीलिम्स रे जतेबे क्वेश्चंस आसीबो डॉल्फिन्स रिगार्डिंग यारो तारो स्पीशीज रिगार्डिंग आसीबो कि ओडिसा रे मोस्ट आपन को को डॉल्फिन्स देखिया पे मिले. तो मे बी आपन क्वेश्चन एमपी रे सेट करथिबे एग्जामिनर थिबे लाइक यूपीएससी पैटर्न लाइक only Irrawaddy dolphins or humpback dolphins or striped dolphins. Then last option आपन को मेंशन थिबो कि all of the above. Okay, so your answer should be all of the above. Okay, कारण हमर जो प्रायर जो हमर थिंकिंग थिला कि only Irrawaddy dolphins. Again Irrawaddy dolphins से कोठो आछि Irrawaddy dolphins? Anyone? Irrawaddy जो dolphins अछि तार लोकेशन प्रॉपर लोकेशन कोठी को प्लेस रो तार जो नेम टी हिची जो इरावाडी जो नेम टी के जानि छथि. कान देखंतु डॉल्फिन्स हला, टर्टल्स हला, ऑलिव रिडेड टर्टल्स. देन हमरा ब्लैक बक रिगार्डिंग तो ऑलरेडी आसीस क्वेश्चंस. ओडिसा अंडर रे जहां भी माने आपनकर इंपोर्टेंट एक्सोटिक स्पीशीज बे ऑफ बेंगल्स अमित राउत रिचंती. बे ऑफ बेंगल तार पर्टिकुलर लोकेशन टी मते प्लीज कहबे कारण तार एग्जाम रे तार पर्टिकुलर लोकेशन टी आसीबो. इरावाडी डॉल्फिन्स बिलोंग टू को कंट्री रू, एक्चुअली से को कंट्री रू आछि इरावाडी जो नेम टी तार जो रिवर टी अछि. एनीवन? नो, ऑस्ट्रेलिया हबनी. सर बे ऑफ बेंगल? नो, बे ऑफ बेंगल हबनी. तार प्रॉपर आंसर टी मु कह दोछि म्यांमार. ओके, आप नोट करने पे म्यांमार सुबेंदु करेक्ट अछि. म्यांमार रो जो इरावाडी जो रिवर अछि से रिवर डॉल्फिन रे से देखा जाय. सो म्यांमार रो माने बिलोंग करंती. एंड ए जो म्यांमार रिगार्डिंग क्वेश्चन टी आपन को यूपीएससी रे भी ऑलरेडी आसी सारची कि कोठु बिलोंग करंती एक्चुअली रे. इरावाडी डॉल्फिन्स तो हमें समस्त जानिछु, किंतु तार एक्चुअल जो बिलोंग कोठु करूछंती इरावाडी नेम टी कोठु आछि से होछि म्यांमार आछि, सेठी तार रिवर आछि. राइट.
देन इरावाडी डॉल्फिन सहित हमको देखिया पे मिले ओडिसा रे बॉटल नोज डॉल्फिन जोटा कि ह्यूज क्वांटिटी रे आपण मन देखि पतले स्क्रीन रे लाइक 45 इरावाडी डॉल्फिन हमर गोटे मिसकंसेप्शन थिला कि इरावाडी डॉल्फिन्स हाईएस्ट परिमाण रे अछंती ओडिसा रे ना बॉटल नोज अछंती 135 then 32 humpback dolphins, okay, then 13 striped and 15 sniper dolphins अछंती. तो all types of species ओडिसा रे देखिया पे मिले and याकू नोट करनेबे जेतले फ्यूचर रे आपन को क्वेश्चंस किछि पैटर्न आपन फ्यूचर रे चेंज देखिया पे पाइबे लाइक यूपीएससी पैटर्न किछि इंट्रोड्यूस हबो एथिरे आई थिंक सो मते जा लागुची जाकी प्रति वर्ष ओपीएससी तार पैटर्न को चेंज करी करी आछी. ओके तो निहाती भाबरे आपन को जो प्रयास जो थी आपन को जो ट्राई करबे क्वेश्चन को सॉल्व करिया पई जो यूपीएससी रो लो लेवल मींस तार जो इजी जो लेवल जो क्वेश्चंस गुडी को आपन को देखिया पई पाइबे ओपीएससी रो मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चंस संगे जो इक्विवेलेंट जदी हमें करिबा. ओके लाइक स्टेटमेंट बेस रो क्वेश्चन आपन पॉलिटी सेक्शन रे मे भी देखिया पई पाई पारंती एथरो ओपीएससी फिल्म रे एंड आउ बाकी जो ऑप्शन में स्टेटमेंट बेस रो किछि भी ऑप्शन रहइबनी. आई थिंक पॉलिटी रे आपन माने पाइबे इकोनॉमिक्स आपन को डायरेक्ट क्वेश्चंस आसीबो डायरेक्ट ऑप्शन आसीबो वन लाइनर्स एंड आपन को एनवायरमेंटल क्वेश्चन मध्ये आपन स्टेटमेंट बेसिस रे देखिया पई पाइबे मे भी पाई पारंती एथरो जो ओपीएससी प्रीलिम्स टे हबो. ओके सो एई जो नाम्स गुडी को एई जो स्पीसीज गुडी को भलो भाबरे आपन नोट डाउन करनेबे इरावाडी बॉटल नोज हम्पबैक स्ट्रिप एंड आपन को रहला स्नाइपर डॉल्फिन. ओके देन जानिबा आउट डिटेल्स रे. So however, the count of dolphin in Chile Wildlife Division saw a dip from 188 in 2021 and 167 in 2022. So जदि हमें देखिबा कि चिलिका रे यार जो वाइल्ड लाइफ रो जो हैबिटेशंस रहिछि बा तांकर रिप्रोडक्शन रहिछि तार क्वांटिटी समहाउ कमी छि किंतु जदि हमें देखिबा कि गहिरमथा जो आपन को जो एरिया टी रहिछि गहिरमथा एरिया रे ईयर बाय ईयर इंक्रीज होछि तांकर सराउंडिंग तांको सुटेबल रहउछि सेति में समने इंक्रीज करछन्ती. ओके सो then next come to the next current affair. So record mass nesting in Ganjam Rusiculia. Okay record mass nesting in Ganjam Rusiculia. Ganjam Rusiculia रे कोन देखिया पे मिले हमकु olive ridley turtles. The annual nesting season of olive ridley turtles at Rusiculia Rukeri in Ganjam district has created a new record of over 5.5 lakh nests in nest this year. तो एई वर्ष आपनकर मींस हाईएस्ट क्वांटिटी रे आपन को नेस्टिंग देखिया पे मिली छी बहुत पे बहुत रिसेंट टाइम रे कोविड ते जाई छी ता जदि हमें प्रायर जो कंडीशन हमें जस्ट चेक करनेबा रफली कोविड जाई छी. सो कोविड रिगार्डिंग बहुत सारा कम्युनिकेशन गैप रहितला एंड बहुत सारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन लागू हुए नॉर्मल डेज रे मींस नॉर्मल ताकर नेस्टिंग टाइम पीरियड रे. सो प्री कोविड टाइम पीरियड रे बहुत सारा ताकर एंगेजमेंट देखिया पे मिले जो आपनकर बोट्स रहिछि नेस्टिंग रहिछि एंड आपन नेट्स जो जालो बिछे कि एंड माफिया माने जो माने रहछन्ती पोचर्स मान ताको चालान मध्ये करंती ट्रैफिकिंग मध्ये करंती. तो कोविड टाइम रे एते कम्युनिकेशन आपन कर हेइनी से प्लेसेस रे एंड ताको पेट्रोलिंग पई मध्ये सुविधा हेतला. तो बहुत सारा से माने डेवलपमेंट कर दैछन्ती सेही रिगार्डिंग सिक्योरिटी पर्पस रिगार्डिंग. तो सेति में तारो जो रिजल्ट एई वर्ष देखिया पे मिलछि 5.5 लाख जो नेस्टिंग हेछि एई वर्ष ए ह्यूज क्वांटिटी रे. Apart from the record mass nesting, a good number of olive ridley turtles at Rusiculia Rukeri was tagged by Geological Survey of India. तार जो हेडक्वार्टर टी अछि नोट डाउन करनेबे न्यू अलीपुर कोलकाता रे. ओके जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मे भी आपन को एग्जामिनेशन आसी पारे कारण आपन समस्त जानछन्ती कि नेशनल लेवल गोटे ऑर्गेनाइजेशन आपन को हेडक्वार्टर रो नेम पचारे एंड इंटरनेशनल लेवल लाइक यूएनओ रो जो ऑर्गेनाइजेशन अछि विंग्स अछि तार जो आपन को हेडक्वार्टर प्राय पचारे आपन को डेट वाइज क्वेश्चन असे नेशनल एंड इंटरनेशनल डेट्स वाइज आपन को क्वेश्चन असे मींस जो एबे जो गला रिसेंट डेट रे आपन को मे 1 ओके मे 1 इंटरनेशनल वर्कर्स डे और लेबर्स डे रिगार्डिंग तारो थीम्स भी आपन को पचारे जाई पारे. तो एमती भाबरे बहुत सारा अछि जाके आपन को एग्जामिनेशन पूर्व रु सिलेक्शन दे देबी करंट अफेयर जे तुम कवर करूची. तो करंट अफेयर रे आपन को सिलेक्शन इंडेक्सेस वगैरह इंडेक्सेस इंपोर्टेंट इंडेक्सेस आपन को प्रोवाइड कर दियो. ओके सो नोट डाउन करने बे कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रो जो हेडक्वार्टर टी अछि से अछि कोलकाता रे. या पूर्व 2017 ने सेंटी बार गोटे नेशनल हेडक्वार्टर ने की इंस्टीट्यूशन लाइक एराइड रिसर्च इंस्टीट्यूट कोठी अछि 2017 ने आस्तला ये आस्तला आपन को 2017 ने एराइड रिसर्च इंस्टीट्यूट
जोधपुर ओके एराइड शुष्क अंचल अछि तो आपन का आईडिया निहाती भाबरे राजस्थान आड़ को जिबा दरकार ओके सो जोधपुर अछि 2017 आछि तो प्रीलिम्स क्लियर करबा एते बड़ जिंस नुहे किंतु प्रीलिम्स क्लियर करबा एते इजी भी नुहे जदि में प्रायर तार जदि प्रॉपर्ली कैलकुलेशन न करथवा एनालिसिस जदि न करथवा हैप्पीजेड मैनर रे हमें जदि कवर कर दिबा सब कुछ ताले किछि लाभ नै तो हमको स्मार्ट वर्क करके ही आगु जिबार अछि तो ओडिसा रो क्वेश्चंस बहुत ही देखिबा पई मिलिबा आपनको नेक्स्ट एग्जामिनेशन रे जहां भी आपन अपकमिंग एग्जामिनेशन आछि 2020 वन जो एबे एग्जामिनेशन हो देन 2022 ओएस रे जो एग्जामिनेशन हो सेथिरे ओडिसा रो ज्योग्राफी करंट अफेयर हिस्ट्री क्वेश्चंस आपन को बहुत सारा देखे पय मिलबो इवन यदि मु कहबी कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ ओडिसा भी देखे पय मिलबो बजेट सेशन नु मध्ये किछटा क्वेश्चंस आसीबार चांसेस अछि ओके कारण धीरे धीरे माने सब ओडिसा रो क्वेश्चन को मूव करछंती मोस्ट ऑफ द केसेस लाइक 40 टू हां 40% आपनकर मूव कर जिबार या पर चांसेस अछि ओपीएससी रो सेति आपको ओडिसा करंट अफेयर भी सही लेवल लो आपको प्रिपेयर रहबा दरकार सो एठी हमें कोन जानले कि ऋषिकुल्या जो रछि अछि गंजाम रे एंड 5.5 लाख दिस ईयर बहुत हाईएस्ट नेस्टिंग हेछि एंड नेस्टिंग यारो जो जदि यारो रिलेशन आपन प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ रे अछि तारो हमें डिटेल डिस्कस करिया सो एंड ए जो सर्वे टिके करतला जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यार हेडक्वार्टर अछि अलीपुर कोलकाता रे द टैगिंग हैज बीन टेकन अप for studying migrations route of the endangered species okay endangered species बहुत सारे species related अछि जतले environment आपण माने पढिबे सेतले को डिटेल्स रे पदिबे नले मु क्लास रे मध्ये हमरो जो ज्योग्राफी क्लास रे आई थिंक environment आपण को के कवर करथबे कि नहीं तो मु जाननी मु सर को सहित कंसल्ट करी कि environment रो जो आपण को endangered species गुडी को अछि बा तार जो प्रायर जो स्ट्रैटिफिकेशन अछि ओके तो सेही रिगार्डिंग मु आपण को इंफॉर्मेशन दे दिबी सो आपनको एनवायरनमेंट मध्ये टिके रिलेटेड हे जिवो ज्योग्राफी सहित आई थिंक सो एंडेंजर्ड स्पीसीज रे काउंट कर जाय टिल डे अबाउट 6500 टर्टल्स हैव बीन टैग्ड ए पर्यंत 6500 जो टर्टल अछन ताको टैग कराय छि ओके ताको चिन्हट कराय छि एबे जानिबा टिके डिटेल्स मैनर रे सो दिस इज फॉर योर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज योर men's perspective and as well as your prelims perspective like the olive ridley turtles are the smallest and the most abundant of all sea turtles found in the world okay मु काहे कि एटा को इंपोर्टेंट एते नेली कारण olive ridley turtle रिगार्डिंग हमरो ओएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आसी सरची से भी स्टेटमेंट बेस रो एंड आपण जदी के जदी जानथिबे ओमास एग्जामिनेशन थोरे मात्र हेतला 2019 रे एंड सेतरे डायरेक्ट olive ridley turtles रो पूरा स्टेटमेंट वाइज रो गोटे क्वेश्चन आस्तला ओके तो आपनकर वर्क रहबो कि ओमास क्वेश्चन नो जो आपण नेट रे अवेलेबल हे होची ओमास क्वेश्चन 2019 आपण डाउनलोड करबे सेति olive ridley रो जहा भी क्वेश्चन अछि गोटे क्वेश्चन थिला ताकू सॉल्व करिया पई आपण ट्राई करबे ओके सो एठी हम डिटेल्स टिके देखिनबा कि द olive ridley turtles are the smallest and most abundant of all sea turtles found in the world ये गोटे पॉइंट रहला आपन को कारण जदी स्टेटमेंट बेस यार क्वेश्चन आपन माने नियाति भाबरे पाइबे एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आसीबनी सो दीस टर्टल्स आर कार्निवरस ये गोटे सेकंड पॉइंट रे भी मेंशन कर दी पारंती दिस जो ए जो टर्टल्स माने होचंती ये होचंती कार्निवरस गेट देयर नेम फ्रॉम देयर ऑलिव कलर जो सारा पेक होची ओके ताकर जो फळ अछि बा फळ पाची अछि जो बैक साइड रे तो तारो जो ऑलिव कलर ने की यहां पर नेम दी अछि ऑलिव रिडले टर्टल्स करेक्ट तो आपन को दीटा स्टेटमेंट एबे मिली छी यार जस्ट आपन लोकेशन देखि नियंतु गहिरमथा जो मेराइन सेंचुरी गहिरमथा एंड ऋषिकुल्या रे मेनली हमर जो गहिरमथा रे बेसिकली आपन को डॉल्फिन्स रो एई वर्ष इंक्रीमेंट हेची प्लस गहिरमथा एंड ऋषिकुल्या रे हमर ऑलिव रिडले टर्टल्स रो बहुत सारा आपन कम्युनिकेशन देखे पई पाई जिवे ओके सो प्रोटेक्शन स्टेटस को जदी हमें देखिबा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये मेंशन अछि शेड्यूल 1 कैटेगरी अगेंस्ट व्हाट इज शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 कैटेगरी ताको मध्ये नेक्स्ट क्लास रे मु क्लास भीतर आपन क्लियर कर देबी देन आईयूसीएन रेड डाटा लिस्ट जो रही हमरो आईयूसीएन हेडक्वार्टर आपन मन नियाति बाबरे आज जेकी सर्च करिवे एंड पढिथिबे आईयूसीएन रेड डाटा लिस्ट व्हाट इज रेड डाटा लिस्ट ओके तो ताको अभी आपन सर्च करके आपन नोट डाउन करिवे जा द्वारा कि आज रो गोटे क्लास रे आपन को बहुत सारा बेनिफिट्स मिलिबो बहुत सारा पॉइंट्स को आपन टच कर परबे साइमल्टेनियसली गोटे इवनिंग रे आपन ई आज कार इवनिंग रे बहुत सारा पॉइंट्स आपन कलेक्ट कर परबे सो आईयूसीएन रेड डाटा लिस्ट रे याको वल्नरेबल कैटेगरी रे सॉरी वल्नरेबल कैटेगरी रे इंक्लूड कराई छी एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट
रो 1972 रे शेड्यूल 1 हिसाब रे याकू जगह प्लेसिंग दिया जायछि एंड सिटीज जो रही हमर डाटा कलेक्शन ताकू अपेंडिक्स 1 ने मेंशन करा जायछि ओके तो ये आपन को रहला ओवरऑल थर्ड पॉइंट देन हैबिटेट को जदी हमें जिबा दे आर फाउंड इन वार्म वाटर ऑफ पैसिफिक एंड अटलांटिक एंड जो पैसिफिक अटलांटिक एंड इंडियन ओशन है मोस्ट इंपोर्टेंट जो पैसिफिक अटलांटिक इंडियन ओशन सो कई मते कोइ परबे कि व्हिच ओशन शेप्ड एज एस शेप रो को ओशन टी अछि एनीवन most busiest ocean of the world Sir, Atlantic Ocean. very good Amit very good Madhuri very good एस शेप तार अछि से अछि अटलांटिक एंड मोस्ट बिजिएस्ट यदि आपन को क्वेश्चन टी बहुत इजी लागुची ताले आपन को 2 मार्क्स ऑलरेडी आसी जाची कारण प्रीवियस ईयर ओएस क्वेश्चन ही आछि ओके मोस्ट बिजिएस्ट जो रूट रहिची को ओशन तो ताको जस्ट एनालिसिस करिवे एमति नुए कि आपन बहुत ही डीपली आपन को स्टडी करिवार अछि कोन से भी जिंस आपन को प्रायर जो आपन को नॉलेज नने कि आपन स्टार्ट करिवेनी सेति मैं बारंबार कोइ कि आपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भलो रे जति की टाइम आपन दोचंती पढिया पई सेति की टाइम दियंतु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करिया पई कि एक्चुअली रे को पार्ट रु केते डेप्थ रु क्वेश्चन आछि ताको आपन जदी आपन 1 मंथ ने कि जदी आपन जज कर नै जेबे तो आई थिंक आपन मन को बहुत ही इजी हबो नेक्स्ट स्टेप रे आपन क्विकली कवर कर परबे जदी आपन ए टेक्निक को बिलीव करनांती तो यू कैन चेक जोटा हमर प्रीवियस जो हेतले सिविल सर्विस रे सेकंड प्लेस एक्वायर करथले ऑल इंडिया रैंकिंग रे फीमेल पर्सन जने ताको नेम टी मो प्राइम मने पड़नी तांकर रिकमेंडेशन ये थिला कि से गोटे मंथ लगे कि पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करथले कोन सी भी टॉपिक को जीवा पूर्व से एनालिसिस रे 1 मंथ देथिले एंड तापरे तांकू सब किछि कवर करिया पई इजी हेतला क्विकली से कवर कर जेतले एंड सेकंड रैंक रे ऑल इंडिया रैंक रे से क्लिक करथले ओके नेक्स्ट जीवा तो यार हैबिटेट हमें पढ़ुतले दे आर फाउंड इन वार्म वाटर ऑफ द पैसिफिक अटलांटिक एंड इंडियन ओशन द ओडिशा's Gahirmatha marine sanctuary is known as world's largest rookery rookery means colony of breeding animals of sea turtles जोटा कि अपन कॉलोनी हिसाब रे अपन को सी टर्टल्स बा ब्रीडिंग एनिमल्स हो ताकू कुआ जाय रूकेरी ओके ये अपन को इंग्लिश रे मध्ये देखिया पई मिली जो जदी अपन को पेपर 2 पार्ट रे आछी पेपर 2 पार्ट रे अपन कम्युनिकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज रे बेले बेले ए टाइप रो क्वेश्चंस पड़ी जाय रूकेरी रिगार्डिंग अपन को ऑड मैन आउट हिसाब रे अपन क्वेश्चंस भी पचारे जाय पारे किबा यारो मीनिंग्स रिगार्डिंग याको जस्टिफाई करि परबे यारो सिनोनिम्स भी दे पारंती अपन को पेपर 2 रे okay so rookery mane hochi colony of breeding animals takwa je rookery then sea turtles they are best known for their unique mass nesting called aribada okay aribada or aribado apna jaha bhi koi paranti so aribada jo roichi aribada so ये नाम टी को अपन नोट डाउन करनियो तो कारण बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ये एग्जामिनेशन में निहाती भाबरे आछी ओके कारण एग्जामिनर कोन करिवे ई जो क्वेश्चन को नै कि से जस्ट टिके ट्रिक यूज करके अपन क्वेश्चन के पोर्ट्रे कर देबे अपन को पेपर रे सिंपल मीनिंग रे याकू मेंशन करे कि आरीबाडा रिलेटेड टू व्हिच सेक्टर और व्हिच सेगमेंट ओके सेतरे अपन को इकोनॉमिक्स पॉलिटी ऑप्शन देखिया पे मिल जिवो एनवायरनमेंट रे अपन को एई जो रहिछि ऑलिव रे टर्टल्स रो रिलेटेड अपन को ऑप्शन देखिया पे मिल जिवो सो ये रिलेटेड टू मास नेस्टिंग कॉल्ड आरीबाडा ओके where thousands of females come together अपन मन देखिबे टीवी मीडियास रे मध्ये देखिबे बहुत सारा कंच माने आसंती and thousands मात्रा रे and same beach to lay eggs जो बीच रे से माने जन्म नैथिबे पुनी थरे बैक करंती से बीच को सेटा गोटे ऑलिव रिडले रो खासियत गोटे ओके से माने जो बीच रो से जन्म नैते पुनी थरे बैक करंती तांकर जो अंडा दान समय नेक्स्ट हम करबा कि थ्रेट्स कोन ये आसीगला आपन को मेंस पर्सपेक्टिव हिसाब रे तांको पुनी थ्रेट्स कोन कोन रहउची लाइक मेरीन पॉल्यूशंस रहउची एंड वेस्टेज रहउची आपन जानछन कि प्लास्टिक पॉल्यूशन बहुत ही ह्यूज अछि मेरीन जो सेक्टर रे ओशंस रे एंड अपन हमने जानते कि लाइक यस मेरीन पॉल्यूशंस रहिछि वेस्ट प्रोडक्ट्स रहिछि ह्यूमन कंजम्पशन कोन रहिछि दे आर एक्सटेंसिवली पोस्ट फॉर देयर मीट सेल्स एंड लेदर एंड एग्स नै कि अपन को ह्यूमन तो कान माने ओमनिवोरस से सब किछि खाइ जान ता किछि मिलु न मिलु से सब किछि नष्ट करिवार धुरंधर तो मीट सेल्स आउ तांको किछि देखा गलानी ऑलिव रिडले ही तांको देखा गला लास्ट सो ऑलिव रिडले को तार ट्रैफिकिंग से माने सेमति व्यवहार करंती देन प्लास्टिक गार्बेज ओके
and ever increasing debris of plastics, fishing nets, okay, वगैरह, then polythenes and other garbages dump करा जाए oceans रे, and fishing trawlers, very very important. ए जो points गुड़ी को very very important जो गुड़ी को कहूची आपण माने निहाती note down करने पे, okay. Fishing trawlers, over exploitation of marine resources, बहुत ही huge हमें जो consumption जदी करिबा marine resource को extensive exploitation करिबा कौन सी भी जिंसर extensive layer को जदी हमें touch करूचे तो निहाती भाबरे हम पई सेटा खराब. तो जेति कि marine resource अच्छी तो marine resource को हमें जदी proper utilize करिबा तो ठीक हो. जदी extensive way रे जदी हमें exploitation करिबा निहाती भाबरे shortage हे जिवो दिन दिन. By use of trawlers often violates the rule to not fish like 20 kilometers within a marine sanctuary. Okay. So एठी I think मोटे mark के अपन को indicate करछि एठी जदी अपन के देखिथिबे कि नहीं 12 nautical miles जो एठी मेंशन कराइछि. So मते के कहि परिबे कि what is 12 nautical miles काहे कि ये कंट्री साइड रे थाई जो क्वेश्चन तो 12 nautical miles तार इंपोर्टेंस कोन. What is the importance of 12 nautical miles? Anyone? So that is continental shelf zone, I think. Continental or countries? Country shelf zone. Countries territory in oceans or Ocean territory, yes, sir. and after the 12 nautical miles जो पार्टी अछि सेटा कहारो अविनाश सर 200 nautical miles पर्यंत नेवी रो कंट्रीज नेवी ना नॉर्मली मु जोटा पचाली से तो अपन को आसी गला जो डिफेंस सिस्टम रो 200 जोटा कहले नॉर्मली हमर 12 nautical miles जोटा अछि सेटा अपन को कोन थी पाई ए जो प्रति कंट्री रो 12 nautical miles गोटे क्राइटेरिया बा से गोटे सीमा जो अपन बाउंड्री लाइन क्रिएट कराए थे कोत Sir, marine navigation. सर कोस्टल एरिया Sir, for marine navigation. normal coastal area of country. Okay, 80 हाँ, country sir, तार जहाँ coastal. भी innovation research जहाँ भी marine research marine utilizations करी परिबो resource रो Sir, for marine navigation. ये काली जहाँ राती भी की अपन टिके को पहुंची हाँ जहाँ भी किसी अपन को सत्यनारायण पार्लर टिके होची हला मोरतरे अच्छे संतोष के माइक ऑफ करिबो हइले सॉरी सर ओके ओके हाँ सो 12 nautical miles पर्यंत जेति कि अपन को एरियाज अछि से कंट्री मींस इंडिया रो जो 12 nautical miles अपन को एरिया जो देखा अछि सेटा इंडिया रो आफ्टर दैट इंटरनेशनल बाउंड्री स्टार्ट हो जाए. ओके 12 nautical miles पर इंटरनेशनल बाउंड्री स्टार्ट हो जाए सेतिर आपन को इंटरनेशनली सब कुछ जहां भी आपन करूछंती तो आपन को इंटरनेशनल वे रे आपन रिस्पांसिबल हेबा पई पड़े यूएन अंडर रे जहां भी तांकर क्राइटेरिया थिबो किंतु विद इन 12 nautical miles आपन काहारे भी प्रायर परमिशन दरकार नहीं कंट्री जदी परमिशन दोछ तो कंट्री ता हिसाब रे यूज कर पानी. ओके सो व्हाट नॉलेज मूव करबा नेक्स्ट. हां हम डिस्कस करतले ई सब प्रॉब्लम्स अछि थ्रेट्स अछि फॉर ओलिव रिले टर्टल्स. Then there were injury marks on many dead turtles indicating that could have been trapped under the trawlers or gill nets. Okay. बेले बेले टाइम रे कोन होय ना जो ट्रॉलर्स गुडी को जानती मोटर बोट्स गुडी को जानती सेतिर तांको जो बॉडी गुडी को कट ही थाई एंड जो नेट्स गुडी को सेमने नै की जानती सेतिरे मोस्ट ऑफ द केसेस रे आपण देखिथिबे टीवी मीडियाज रे मध्ये तांकर जो सेमने अटकी जानती. ओके फसी जानती. It is the world's largest nesting beach of olive ridley sea turtles. Gahirmatha was declared very very important. Gahirmatha आपन को डिक्लेयर हेतला टर्टल सेंचुरी इन 1997. 1997 रे 1997 ने गहिरमथा टर्टल सेंचुरी हिसाब रे डिक्लेयर हेतला by the Odisha government after considering its ecological importance and as part of efforts to save the sea turtles. And Gahirmatha marine sanctuary is one of the 3 parts of the Bhitarkanika. ये Bhitarkanika रो which part रही and the other 2 including the areas of Bhitarkanika National Park and Bhitarkanika Wildlife Sanctuary. Okay, Bhitarkanika Wildlife Sanctuary मध्ये किछि पार्ट नहीं छी and Bhitarkanika National Park मध्ये किछि पार्ट नहीं छी. जेतले आपन को ओडिशा ज्योग्राफी पढेबी तो दीटा जगह पढे Bhitarkanika National Park and Bhitarkanika Wildlife Sanctuary. Okay, से रिगार्डिंग देन हम कोन देखुचे नेक्स्ट
करंट अफेयर आपनकर असुरगढ़ फोर्ट. असुरगढ़ फोर्ट सेटलमेंट बिलोंग टू आयरन एज ओल्डर देन शिशुपालगढ़. यदि के मोर ओडिशा हिस्ट्री क्लास के करथले आई थिंक सेवन नियाते बाबा शिशुपालगढ़ जो नेम टी नियाते बाबा सुनिथिले. एनीवन फ्रॉम दिस पैनल ए पैनल जो माने भी प्रेजेंट अछंती ओडिशा हिस्ट्री क्लास के माने को माने बिलोंग करंती बा को माने करछंती मोर. सो शिशुपालगढ़ नाम तो हमें डिस्कस करथिले क्लास रे बहुत टाइम हिची 2 to 3 टाइम्स मध्ये आइची. अशोका देन हमें जो खारवेला को टाइम रे शिशुपालगढ़ रिगार्डिंग हमें पढिथिले मध्ये. तो एठी कोन होची ना असुरगढ़ जो फोर्ट टी रहिची असुरगढ़ से अछि कलाहांडी रे. ओके दी टाइप रो जगह अछि आपन को असुरगढ़ अछि कलाहांडी रे एंड आसिरगढ़. आसिरगढ़ नाम भी कई सुनिचंती आसिरगढ़. आसिरगढ़ नो सर. आसिरगढ़ यदि आपण वीर सुरेंद्र साई को स्टोरी सुनिचंती आपण. यस सर गंजाम बरहमपुर. यस तांकु सेठी बंदी करा जायतिला आसिरगढ़ रे. आसिरगढ़ एक्चुअली आपनकर बरहमपुर रे नहीं आसिरगढ़ जो दुर्गटी अछि आपनकर एमपी रे अछि. छत्तीसगढ़ एमपी जो कनेक्टेड थिला एमपी थिला तो सेठी तांकु बंदी कराथिला आसिरगढ़ दुर्ग रे. एंड जो असुरगढ़ अछि आपनकर एक्सकावेशन साइट टे अछि. तो या भीतर कंफ्यूज हेबेनी. ये होची असुरगढ़ से होची आसिरगढ़. जेतरा में हिस्ट्री क्लास रे मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री जेतरा में कवर करिया सेतरे हमें नियाते रे पढिबा जो वीर सुरेंद्र साई को रिगार्डिंग. तो असुरगढ़ जो अछि ये कलाहांडी रु बिलोंग करछि डिस्ट्रिक्ट रु व्हिच वाज बिलीव टू बी मौर्यन पीरियड. जोटा कि आपन बिलीव करथला मौर्यन पीरियड रु से थिबो किंतु ता पूर्व रु मध्ये यार एविडेंस मिलिछि लाइक 322 to 185 BC एक्चुअली बिलोंग टू द आयरन एज. बिलोंग टू को एज रु आयरन एज रु ये बिलोंग करछि बोली रिसेंट एक्सकैवेशन रु हमको देखिया पे मिलिछि बा जानिया पे मिलिछि. So the journal which has reported to accelerator mass spectrometry. Okay जो ये आरो अछि accelerator mass spectrometry ये one kind of कार्बन डेटिंग प्रोसेस. तो एक्चुअल मीनिंग रे कहिबाटा ठीक हबनी किंतु से सेम प्रोसेस किंतु टिके जस्ट डिफरेंट रहिछि परस्पर भितरे. Dating of the site stated that study has pushed back the antiquity of Asurgarh settlement to around 3000 years old belong to the Iron Age. Going by the dating, it can be safely said that the fort site older than Sisupalgarh, जोटा कि एबे हमें रिसेंटली कंसीडर करथलु बा हिस्ट्री हमें पढितलु कि शिशुपालगढ़ कोठी अछि खोरदा रे अछि. ओके यार एविडेंसेस को टाइम रे देखिया पे मिलतिला हमर जो अशोकगढ़ टाइम पीरियड रे तोसाली जो थिला जो प्रॉपर एरिया थिला तोसाली से तार नाम थिला फॉर्मर नाम थिला शिशुपालगढ़. एंड जदि हमें खारवेला को टाइम पीरियड को जदि नबा खारवेला को टाइम पीरियड जो कलिंग नगर थिला से थिला शिशुपालगढ़ रो जो से टेरिटोरी. ओके सो the going back to dating सेटा त हम डिस्कस करले. going back to the dating, it can be safely said that the fort site older than Sisupalgarh, which is considered to be 5 to 6 century BC, around 2500 to 2600 years old. Earlier in 2019 2019 रे बहुत सारा लाइक सिल्वर कॉइन्स, ज्वेलरी, precious beads and rare terracotta excavated from the Asurgarh had pointed to the existence of civilization dating 2300 years back. Okay तो आजिरो टॉपिक परे आजिरो क्लास परे तो आपण माने जतले निहाते रे रात्रि आपण जतले सेल्फ स्टडी करथबे निहाते रे इंडस वैली सिविलाइजेशंस एंड तारो जो फॉर्मर जो सिविलाइजेशंस रिगार्डिंग आपण माने टिके जस्ट ओवरलुक करने थे इंडस वैली सिविलाइजेशन. एंड सेथिरे ए जो हमर ओडिसा रो लाइक पुलियणा जो अछि हमर मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रो एंड बहुत सारा प्लेसेस ओडिसा रो अछि से भितरे असुरगढ़ मध्ये आछि. ओके तो तारो लिस्ट मध्ये आपण माने टिके जस्ट सर्च करने थे कि से टाइम पीरियड रे हमर इंडिया ओडिसा रो को पार्ट बा को प्लेसेस गुडी को बिलोंग करंती. ओके तो सेति पे आपण इंडस वैली सिविलाइजेशंस या परे जो क्लास टी परे आपण माने ओवरलुक करने थे. देन हिस्ट्री क्लास रे जे आपण को हिस्ट्री क्लास नउछंती इंडियन हिस्ट्री क्लास रे से डीपली आपण को इंफॉर्मेशन देते. ओके सो the site was declared protected under the ancient monuments of archaeological sites or remains act जो रही आपन 1958 ancient monument act archaeological site act 1958 in 1973. So एठी हमें बेसिकली जानिबा कोन the iron age was a period of human history that started between
लगभग आपण कहि परबे कि ऑन एन एवरेज 1200 बीसी रु 1200 बीसी टू 600 बीसी पर्यंत यार जो थिला टाइमटा आयरन एज रो सो जदि हम कंसीडर करबा कि इंडिया रो आयरन एज कोटा को कंसीडर करतला इंडियास आयरन एज emerged in an era of transition known as the Vedic period. जो आपनकर civilization end हितला and जो transition period थिला Vedic period बा Vedic culture रो जो start हितला तो सेही टाइम रे आपनको आयरन एज हितला ऑलरेडी समस्त जानचंती कि इंडस वैली सिविलाइजेशन रे आपनको ब्रोंज मिलतला बाकी सब मिनरल्स बा आपनको एलिमेंट्स मिलतला किंतु आयरन रो डिस्कवर सेते बेल को हेइ नतला बोले और मन रखिबे कारण ए जो क्वेश्चन टी ये एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आयरन डिस्कवर सही मिनरल रे हेइ नतला जो इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम रे आयरन व्यवहार केइ जान नतले तो एग्जामिनेशन आपको दे पारे यस यस तो रिसेंट एक्सकैवेशन नु मिलची कि यार जो टाइम पीरियड थिला मौर्यन बा अशोकन टाइम पीरियड न थाई कि आयरन एज रु बिलोंग करथला हमरा आयरन एज इंडिया रे स्टार्ट हेतला अर्लियर वैदिक पीरियड टाइम रे ओके इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हेतला एंड अर्लियर टाइम पीरियड जो स्टार्ट हेतला सही टाइम रे हमरा आयरन यूजेस इंडिया रे फर्स्ट टाइम पे हेतला किंतु इंडस वैली सिविलाइजेशन ने आयरन यूज के जान नथले एंड ये गोटे एग्जामिनेशन क्वेश्चन मध्य को मिनरल बा को आपको मिनरल्स टी डिस्कवर हे नथला ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस ओके से होची आयरन तार ब्रोंज रो समस्त जानतले डिस्कवर हेतला एंड तार टाइम पीरियड टी आज जाई कि ओवरलुक करने कि टाइम पीरियड केते रु केते थिला ऑन एन एवरेज हिसाब रे सो देन हमें जिबा कार्बन डेटिंग ऑल्दो बोथ रेडियो कार्बन डेटिंग जोटा कि आपनकर इयर्स गुडी को मापे पे जणा पड़े कि हम जो डिटेक्ट करू कि को ऑब्जेक्ट रो केते इयर्स रु सेमने बिलोंग करछंती रेडियो कार्बन डेटिंग तो हमें प्राय समस्त जानछु मेथड्स प्रोड्यूस्ड हाई क्वालिटी रिजल्ट्स दे आर फंडामेंटली डिफरेंट जो आपनकर न्यू जो रेडियोमेट्रिक्स जो डेटिंग अछि सो रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड्स डिटेक्ट बीटा पार्टिकल्स फ्रॉम डीके ऑफ कार्बन 14 एटम्स while the accelerator mass spectrometers count the number of carbon 14 atoms present in the samples एठी कोन होय ना 14 एटम्स जो डीके हे जाय जो पार्टिकल्स बा ऑब्जेक्ट हमको मिलची से कार्बन डेटिंग रे फाउंड हे जाय किंतु या एथिरे जो हमरो एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमीटर्स रे कोन बेनिफिट्स अछि जहां भी आपन को पार्टिकल्स अछि से क्विकली काउंट करबो ताको ओके 14 एटम्स जीवा नेक्स्ट धर्मेंद्र प्रधान अनवील्स इंडिया's फर्स्ट इंटरनेशनल स्किल सेंटर जोटा कि ओडिसा रे हेबा पे जाउची एंड इंडिया रो ये फर्स्ट स्किल जो डेवलपमेंट सेंटर एंड कंट्रीज फर्स्ट स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर वाज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एंड बिफोर दिस मिनिस्ट्री से को मिनिस्ट्री थिले धर्मेंद्र प्रधान So the center set up the collaboration with the NSTC International on the Skill Development Institute, जोटा कि हमरो प्रायतः भुवनेश्वर हेबा पे जाउची and is aimed at imparting the international standard skill training to the youth and enhancing overseas जो हमरो वर्कर्स जानती जो स्किल्ड लेबर्स माने जानती यूएई कनाडा ऑस्ट्रेलिया अदर गल्फ कंट्री को तो ताकू कि परिभाबरे डेवलप्ड वे रे ताकू बहुत स्किलफुल वे रे ताकू केमति भाबरे पोर्ट्रे करा जाय परिबो केमति भाबरे सेठी जे कि समने प्रॉपर्ली सब किछि करि परिबे तो से रिगार्डिंग ट्रेनिंग दिया जिवो एंड इंडिया रो फर्स्ट से जो इंटरनेशनल स्किल सेंटर ओडिसा रे हबो ओके नियत भाबरे मन रखिबे कारण इंडिया रो सबटु माने फर्स्ट जोटा होची सेटा ओडिसा रे होची एंड ओडिसा रो क्वेश्चंस नियत भाबरे आसीबार चांसेस होची देन लेजेंडरी म्यूजिशियन प्रफुल्ल कर पासेस हबो तो यांकर जो मु काहे कि मेंशन करली बहुत सारा हमर म्यूजिशियन अछंती एंड राइटर्स अछंती पोएट्स अछंती जो मानकर जो नेशनल इंटरनेशनल दरबार रे मध्ये तांको रिकमेंडेशन मिलची ओके तो तांको भीतर प्रफुल्ल कर जने थिले सो कर मेड अ डेब्यूट एज प्रोफेशनल सिंगर इन द ओडिया फिल्म इंडस्ट्री 1962 विथ श्री श्री पतित पावन जो रहिची एंड हैविंग डायरेक्टेड म्यूजिक for over 60 Odia and 4 Bengali movies. Okay. Kaur was honored with the Padma Shri. सेति पे मु याको इंक्लूड करली कारण तांको पद्म श्री मिलितला in the year of 2015 in the field of art and the prestigious जयदेव पुरस्कार जहा कि हमर ओडिसा रो टॉप मोस्ट अवार्ड कहले चले आर्ट एंड कल्चर सेक्टर रे in 2004 रे तांको मिलितला and in 2009 the Odisha's संगीत नाटक एकेडमीज highest honor कवि सम्राट उपेंद्र भंज अवार्ड भी तांको मिली ओके
तो ताकू घरे घरे परिचित कमल देशर राजकुमार जो जाके आपण पेपर टीवी मीडिया रे आपण नियत भाबरे सुनिथिबे ताको फेमस जो रहिछि नाटी जो ताकर क्रिएशन दिथिला then next important and एथरु आसीबार चांसेस आपण को 70 to 80% मिल रहिछि yes so Odisha's first animal overpass to come up in Kapilash तो आपण माने जानछथि ओवरब्रिज जो ओवरपास रहिछि ऑलरेडी एनएच रे चलछि किंतु इंडिया रो फर्स्ट एंड ओडिसा रो फर्स्ट जो रहिछि overpass for the animals first time ପାଇଁ ओडिसा एंड आउ गोटे स्टेट ପାଇଁ मध्ये हेतला झारखंड सो इंडिया रे एई दिटी स्टेट ପାଇଁ छि गोटे होछि ओडिसा एंड गोटे होछि झारखंड सेतिरे एई प्रोजेक्ट फर्स्ट स्टार्ट हेछि एंड जो ओडिसा रे कोठी हमर कपिलास रहिछि ओके ओडिसा will soon have its first animal overpass on the railway track जो रेलवे ट्रैक जाइछि अपन कपिलास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रे देखि तो ता ऊपर ओवरपास क्रिएट कराउछि कारण बहुत सारा बहुत टाइम रे देखा जे कि जो क्लासेस हुए आपनकर एनिमल्स भितर आपन एलिफेंट्स मोस्ट ऑफ द केसेस रे आपन एलिफेंट्स एंड ट्रेन रो बहुत एक्सीडेंट्स गुडी को हुए तो ताकू ओवरकम करिया पई सो ढेंकानाल टू एंश्योर सेफ पैसेज फॉर द वाइल्ड एनिमल्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ट्रेन एक्सीडेंट which are a major cause of elephant deaths in the state. The 100 meters long pathway for wildlife be one of the two railway overpasses in the country. Country dita matra dita ebe sudha dita overpass create karauchi. The second one being planned in Jharkhand. It was received the go ahead from the National Board for Wildlife. Okay. जारो आपनकर क्रिएशन हेतिला 1952 रे 1952 रे नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ यार बहुत इंपोर्टेंट जो आपनकर प्लेस रहिछि एई स्लाइड पर हमें डिस्कस करबा मेंस पर्सपेक्टिव पई हो किबा आपन प्रीलिम्स रो पर्सपेक्टिव पई हो एनवायरमेंटल क्वेश्चन आसीबा नियति यार रहिछि मस्ट आसीबो क्वेश्चंस नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ओके सो द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जारो हेडक्वार्टर अछि देहरादून रे भलो रे मन रखितबे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर अछि देहरादून एंड एग्जामिनेशन में ए क्वेश्चन आसीबो एई टाइप रो क्वेश्चन आपन को एग्जामिनेशन आसे जो आपन इंस्टीट्यूट को वेल नोन न थांती ओके वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट आपन कहला एराइट रिसर्च इंस्टीट्यूट ए टाइप रो तो याकर हेडक्वार्टर माने आपन माने पढिबे एंड म आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देबे एग्जामिनेशन पूर्व which had then studied the traffic loads of feasibility of the project recommended on an overpass of 100 meters length with minimum 2 meters deep okay thick soil to provide an animal passes structure over the railway track ebe janiba what is National Board for Wildlife बहुत ही इंपोर्टेंट कनेक्शन रहिछि एंड ताको सेतिबे मु सेपरेटली मेंशन करछि National Board for Wildlife. See, the National Board for Wildlife by NBWL is the apex body. Apex means topmost. Apex body in India for all wildlife related matters. सेतिबे मु आपन कहली कि ये बहुत ही इंपोर्टेंट रहिछि National Board for Wildlife. ये होछि apex body in India, सबुटु topmost body in India जहा के डिसाइड करे wildlife related matters को. It is primarily responsible for the promotion of wildlife conservation and development of wildlife forests. Then it is a statutory body. Again, ये मध्ये गोटे examination point of view पई important question. आपन को प्राय पचारे कि आपन को advisory body और statutory body quasi judicial body बहुत सारा एमती आपन को bodies अछि तो से constitutional bodies non constitutional bodies तो से category under ये statutory bodies सब आसे then constituted under the section of 5A of the Wildlife Protection Act 1972 it approves the projects like including government projects in and around the protected areas like national park wildlife sanctuary etc it is an advisory body also and advises the central government on the policy matter concerned with the wildlife conservation in the country जहां भी आपन को सेंट्रल गवर्नमेंट वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन पई जहां भी नीति बा स्कीम्स सब लागू करबे प्रायर रिकमेंडेशन बा एडवाइजरी याको द्वारा लागू कराइतबा जारी कराइतबा the board was constituted in 2003 under wildlife जो रहिछि WLPA okay Wildlife Protection Act as mentioned before
it placed the Indian Board for Wildlife, which was formed in 1952 as an advisory body. The NBWL is chaired by Prime Minister. देखो तो आउटे most important points अपन मन को पाई कि Prime Minister खुद बा Prime Minister नीचे ही यारो chairman थांती कारो NBWL. Okay, so ये must अपन को जानिबा निहाती दरकार. ओके आपन को फर्स्ट ऑफ ऑल नीति आयोग जानिबा दरकार देन एई टाइप के किछि किछि बॉडीज जो गुडी करे आपन कर एनडीसी नीति आयोग एनडीसी जदियो नाही एबे नीति आयोग हिची सो से विषय आपन जानिबा दरकार तार चेयरमैन के रहंती ओके सो प्राइम मिनिस्टर खोद रहंती तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंपोजिशंस जो रहिची द एनबीडब्ल्यूएल कंप्राइजेस 47 मेंबर 47 जन मेंबर टोटल अछंती एंड काउंटिंग द चेयरपर्सन. The Prime Minister of the country is the ex officio chairman of NBWL. The Prime Minister of Environment, Forest and Climate Change is the vice chairperson of the board. जे जो मिनिस्ट्री थांती एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज रे सी वाइस चेयरपर्सन होंती एंड यार हेड होंती हमर प्राइम मिनिस्टर्स. सो एज पर द WLPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एवरी टाइम ए न्यू गवर्नमेंट इज फॉर्म जते बेले भी आपन को न्यू गवर्नमेंट आसीबो सडन चेंज हो तार प्राइम मिनिस्टर जो ताकर चेयरपर्सन जे भी प्राइम मिनिस्टर रहबे इलेक्शन पर से ही. ओके देन फंक्शन ऑफ द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कौन सब फंक्शंस रही. द फंक्शन ऑफ NBWL आर एज फॉलोज प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड इट्स कंजर्वेशन प्रमोशन करिवो एंड वाइल्ड लाइफ रो डेवलपमेंट केमती रहबो कंजर्वेशन. एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन द मैटर रिलेटिंग टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन केमती होरे करिवे प्रिजर्व केमती करिवे से रिगार्डिंग आपन को माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को से एडवाइस करिवे. गिविंग और रिजर्विंग क्लियरेंस और टू द प्रोजेक्ट्स जहां भी आपन स्कीम्स लागू करिवे ये सब क्लियरेंस अगर दियंती एंड अराउंड नेशनल पार्क्स एंड अदर प्रोटेक्टेड एरिया. No alternation of boundaries of the protected areas is possible without NBWL. जदि आपन को प्रोटेक्टेड एरिया रहछि से केते बेले आपन को अल्टरनेशन पई भी देखाय अल्टरनेशन पई भी से माने केते रेडी होंती कि एति किलोमीटर मध्ये रे अल्टरनेट कर देबा हमर या भी किछि पाखा पाखी बा क्लोज्ड एरिया रे आपन को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोड थांती तो विदाउट यार रिकमेंडेशन प्रायर रिकमेंडेशन बाय अप्रूवल पूर्वरु किछि हे परिबनी. ओके तार नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो कंपोजिशन जो रही NBWL. देन ओडिया लिटरेचर बीणापाणी महांती पासेस हेवे एंड ये मध्य नेशनल लेवल बहुत सारे अवार्ड पाइछंती. द नोटेड लिटरेरी फिगर इन द फील्ड ऑफ ओडिया फिक्शन राइटर महांती वाज awarded with several prestigious literary awards including Atibadi Jagannath Das Award, Sahitya Academy Award and Sarala Samman. Okay, Sarala Samman. Here the literary career began with the publication of Gotiye Ratiro Kahani in 1960. Some of her best stories are Patodei. So Patodei जो तांकर जो क्रिएशन टी अछि से ओडिसा रो घरे घरे परिचित पाटदेई खेल घर देन नईकू रास्ता इवन बहुत सारा अछि इनके घरे एंड हर शॉर्ट स्टोरी पाटदेई won her the साहित्य अकादमी कहीं ही से साहित्य अकादमी अवार्ड पाइले नेशनल लेवल रे 1990 रे. शी वाज कन्फर्ड पद्मश्री ताको पद्मश्री मध्ये मिलतला 2020 रे भलो रे मन रखले जेतु 2020 रो क्वेश्चन से लास्ट ईयर ही आपन को पद्मश्री मिलतला बीणापाणी महांती को. ओके देन एतिकरे आपन को सरिची आपन ओडिसा रे करंट अफेयर फॉर द मंथ ऑफ एप्रिल मास रे आपन को सब कुछ सरिची. एबे हम डिस्कस करबा क्वेश्चन आंसर. तो आई थिंक आपन को सब करंट अफेयर एबे एप्रिल मंथ रो किछ कार किछ डाउट अछि. Then we will start with the mains questions of GS paper 1 of geography papers. Any doubt? समस्त नोट डाउन करूछंती. Yes, sir. Then we start करिबा हमरा क्वेश्चन आंसर राउंड जोटा कि रहिछि केमते बरे आपण मेंस रे राइटिंग करबे. ओके एबे ओपनली डिस्कस करिबा केमते आपण को राइटिंग रहइबो कारण एबे जो पैटर्न चेंज हेछि जीएस पेपर 1 पेपर 2 रो पूर्व भले आपण को
क्वेश्चन देखिया पे मिलबोनी जो हमरो आसला कि लाइक 2 मार्क्स 3 मार्क्स रो क्वेश्चन मध्ये आसला 5 मार्क्स सेमती किछि नुहे एबे डायरेक्टली आपण 10 मार्क्स एंड 20 मार्क्स रो क्वेश्चन देखिया पे मिलुची सेतिरे आपण को पार्ट को कवर करिवे सेटा ही आपण पई आज रो टॉपिक रे आज रो क्लास रे सेटा ही आपण पई इंपोर्टेंट सो ये रहिला 2020 मेंस ज्योग्राफी क्वेश्चंस जाकी अछि जीएस पेपर 1 तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिस्कस करिवा क्वेश्चन वाइज आपण को रिकमेंडेशन देबे को पॉइंट्स गुडी को मेंशन करिया दरकार सेटा आपण कहबे देन हम गोटे सैंपल आंसर गोटे क्रिएट करिया जहा ऊपर आपण माने राइटिंग करिवे बा लिखिबे ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू फॉर ऑल ऑफ यू दैट डिस्कस द प्रेजेंट नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन पॉलिसी ऑफ ओडिशा बोले और देखंतु 10 मार्क्स पाई सेमन देतांती 100 वर्ड्स भीतर और 150 क्वेश्चन मेंशन रहते हैं एंड 250 फॉर 20 मार्क्स क्वेश्चन एतिक वर्ड लिमिट भीतर अपन लिखिबे ओके सो इट फर्स्ट क्वेश्चन होची डिस्कस द प्रेजेंट नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन पॉलिसी ऑफ ओडिशा सो एतिरे को पॉइंट्स गुडी करबो फर्स्ट ऑफ ऑल मते इन्फॉर्म करंतु देन वी विल मूव टू द सैंपल आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टिंग्विश ऑल द थिंग्स regarding natural resources what is natural Okay. भलो भाबरे देखंतु क्वेश्चन कोन मागी छी डिस्कस द प्रेजेंट नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन पॉलिसी ऑफ ओडिशा जति की मागी छी हमकु सेति की लिखिया पई पड़िबो ताठू कम लिखिबेनी ताठू बेसी लिखिबेनी आपन को नॉलेज रे थिले मध्ये आपन मेंशन करबेनी कारण यू हैव टू टच ऑल द क्वेश्चंस व्हिच कम्स अंडर द जीएस पेपर 1 ओके देखि आपन को हिस्ट्री देखिया पे मिलिबो पॉलिटी देखिया पे मिलिबो एनवायरमेंटल किछ क्वेश्चंस मिलिबो नॉर्मल आपन को करंट अफेयर्स मध्ये किछटा देखिया पे मिलिबो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सो एटी कोन करिवे जेति की आपन को डिमांड करछि क्वेश्चन सेति की आपन राइट करिवे फर्स्ट पॉइंट रहइबो व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज सिंपल गोटे लाइन में मेंशन हे जिवो गोटे पॉइंट देन कम टू द नेक्स्ट यस आशुतोष से सर मेंस पेपर 2 आवर रो ना 3 आवर रो मेंस अपन को 3 आवर्स रहइबो किंतु एक्सपीरियंस रो कोइ हां जीएस रो 3 आवर्स सब किछ अपन को 3 आवर्स रहइबो 2 आवर्स किछि नहीं मेंस रो किंतु एक्सपीरियंस रो अपन को कहि दोछि अपन जते भी क्वेश्चन करिवे ना अपन को टाइम सफिशिएंट लागिबोनी टाइम अपन को माने ए कंप्लीट करे पई लागिबो कि आउ किछि घंटा जदी मिल जाथां तो माने बुझी पारंतो आपनकर प्रिपरेशन को लेवल हबा दरकार एंड स्ट्रेटजी को लेवल हबा दरकार सो दैट कि आपन प्रतिटी क्वेश्चन आंसर को टच करिवे विद इन दैट टाइम लिमिट ओके सो जति पे आपन को क्वेश्चन पड़े 10 मार्क्स और 20 मार्क्स पड़ुची निहाती भाबरे आपन को मेंस रे फील हबो कि टाइम सफिशिएंट होनी 3 आवर्स आपन को आराम से चल जिवो ओके तारो कहि देबी क्राइटेरिया कहि देबी केमते बारे आपण जीएस पेपर को क्लिक करिवे बा ताकू केमते बारे पढिबे केते परसेंट पढि कि जिवे केते परसेंट गेस करिवे मेंस रे सो असबा पॉइंट 8 थला कि डिस्कस द प्रेजेंट नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन पॉलिसी ऑफ ओडिशा फर्स्ट पॉइंट रे आपण को डेफिनेशंस रहि जिवो सेकंड पॉइंट रे टाइप्स रहबो कोड केते टाइप्स रो आपण ओडिशा रे देखिया पय मिले नेचुरल रिसोर्स देन मूव कर जिवे क्विकली जते टाइप्स आपण मेंशन करतबे से टाइप्स को टिके टिके जस्ट इलाबोरेट कर देबे इलाबोरेट को सेंस रे माने आपण को नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाइल्ड लाइफ आछी आपण को फॉरेस्ट आछी आपण को मिनरल रिसोर्सेज आछी सॉइल्स आछी बा आपण जा भी कर पारंती ओके तो गोटे गोटे पॉइंट जस्ट नेबे एंड वाटर रिसोर्सेज आछी तो तार सिंगल पॉइंट हिसाब रे रिसेंट रे कोन सब पॉलिसी चलची गोटे गोटे पॉइंट रे मेंशन कर तो आपण को पाका पाकी 10 to 15 पॉइंट्स मिल जिवो एंड आई थिंक 10 to 15 पॉइंट्स रे आपन को ऑलमोस्ट 100 वर्ड्स भीतर कंप्लीट हे जिवो देन क्विकली मूव कर देबे नेक्स्ट क्वेश्चन ओके तो आपन एक्स्ट्रा लिखिबेनी किबा कम भी लिखिबेनी जति की डिमांड सेति की लिखिबे ओके तापर देखिबा कि आपन को क्वेश्चन केतेटा आसुची किबा आसुनी किबा केते आपन प्रिपेयर हे की जाइछंती बा केतेटा आपन गेस करि परिबे बा बिलो द बेल्ट आपन जाई की जस्ट को पॉइंट्स को अपन टच करि परबे जदि आपन को एक क्वेश्चन आंसर आसुनी किंतु आपन को पकड़े आ किछि अल्टरनेटिव नाही आपन को यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चंस बिकॉज़ आपन जेता देखले कि 2-3टा क्वेश्चन मते आसुनी तो मु केमति बारे मोर निजर प्रेजेंटेशन देबी सेठी केमति बारे प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करबी ओके से पॉइंट्स को मते आसीबा देन एठी हमें डिस्कस जस्ट करनबा कि केमति बारे आपन सैंपल आंसर रहइबो ओके केमति आला नेचुरल रिसोर्सेज रो डेफिनेशंस बा केते टाइप रो आपन नेचुरल रिसोर्सेज देखिया पे लैंड वाटर सॉइल plant animals okay wildlife forest
land. For example, the state government for the first time using 3D scanning technology, जोटा कि हमें recently मोर जो करंट अफेयर ओडिशा करंट अफेयर क्लास रे मु ए पॉइंट टी मेंशन करथली एंड एबे रिसेंटली जो हमें कहबा कि पॉलिसीज अंडर रे 3D स्कैनिंग टेक्नोलॉजी चलची लाइट डिटेक्शंस एंड रेंजिंग लीडार टेक्नोलॉजी यदि के मने को माने फॉलो करथबे रेगुलर बेसिस रे ओडिशा करंट अफेयर को एथरे ए पॉइंट मु करथली प्रीवियस मंथ रे लीडार टेक्नोलॉजी टू इंप्लीमेंट सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स इन द फॉरेस्ट एरिया साइमल्टेनियसली लीडार टेक्नोलॉजी सेंति भाबरे जस्ट अ मिनिट The initiative is aimed to improve the foders and water in the forest, thereby the reducing human and animal conflict and the increasing of groundwater recharge. Okay, the forest management एबे आपण स्विच करने जे एटा वाटर आपण को चली गला वाटर एंड सॉइल चली गला एंड एबे आपण स्विच करने बे गोटे पॉइंट रे फॉरेस्ट मैनेजमेंट केमति ओवर को पॉलिसी अंडर रे फॉरेस्ट मैनेजमेंट करछंती देन सिंपली मूव कर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पई को न्यू पॉलिसीज आछि ओके एमति ओवर आपण को 1 2 3 4 5 6 इनटू 10 पॉइंट्स रे आपण मेंशन कर देबे आपण देखिबे कि ऑटोमेटिकली आपनकर 100 वर्ड्स भीतर ये कंप्लीट हो जाउची 100 टू 115 150 वर्ड्स भीतर ये सब कंप्लीट हो जिवो एंड पॉइंट वाइज आपण बिलीव करंतु आपण को एठी 8 मार्क्स पर्यंत मिल जिवो 8 टू 9 मार्क्स पर्यंत मिल जिवो जदी आपण पॉइंट वाइज एमति होरे जस्ट लिखु चंती ओके सिंपल आपण को डेफिनेशन रहइबो टाइप्स रहइबो एंड टाइप्स को जस्ट के इलाबोरेट कर देबे करंट पॉलिसी रिगार्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गला मेंस रो अपना इंटरव्यू लिखबे सेकंड क्वेश्चन हमें दिबा सेकंड क्वेश्चन अछि एक्सप्लेन द रीजनल इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इन ओडिशा देखंतु क्वेश्चन केमति भाबरे आछि हार्ड नुहे क्वेश्चंस आपण जदी डे टू डे लाइफ रे जदी न्यूज़ पेपर फॉलो करतबे टीवी मीडिया फॉलो करतबे जदी ओडिशा रो होल एंड सोल पर्सपेक्टिव ऊपर जिबे मूव करिवा नेक्स्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन द रीजनल इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इन ओडिशा क्वेश्चन को भलो भाबरे देखंतु देन थिंक अबाउट इट को पॉइंट्स गुडी को मेंशन करा दिबा दरकार तो कंक्लूजन क्वेश्चंस गुडी को भी अच्छी लाइक आपण जदी स्क्रीन ने देखि पातबे कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट सेटा होची आपण कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन सेठी आपण को ऑन पॉइंट ऑफ व्यू से मागी छंती जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ नेशंस डेवलपमेंट ओके सो आपण निजे जानि जेबे को क्वेश्चन टे आपण को डायरेक्ट देबा पई पड़िबो को गुडी को क्वेश्चन आपण को निजरो समरी बा निजरो कंक्लूजन देबा पई पड़िबो ओके यस अमित दिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंडिकेट टू पॉइंट्स ओनली एक्सप्लेन करबे सिंपली एक्सप्लेन करबे कि रीजनल इंसिडेंट को गुडी को थिला फर्स्ट पॉइंट तो आपण को कैप्चर करनो छी आपण को डेफिनेशन पार्ट थी देन आपण को रेशियो केते रेशियो रो पॉवर्टी अछि को पार्ट रे खास करी को डिस्ट्रिक्ट रे मेनली अछि आपन को पॉवर्टी एंड को कि पे पॉवर्टी अछि लाइक एजुकेशन को आपन इंक्लूड कर परबे इकोनॉमिकल डिस्पैरिटीज को आपन मेंशन करि परबे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स टेरेन्स हिल्स एरिया जो रही छी कम्युनिकेशन अभाव पई रही छी एंड प्रॉपर गवर्नमेंट स्कीम लागू ही परमी तो सेति पे रीजनल इंसिडेंस जो होची केबी के यू कैन ऐड द केबी के एग्जांपल ओके मालकानगिरी ए सब जिंस गुडी को आपन ऐड कर परबे ठीक अछि हमें जिबा यार सैंपल आंसर कौन कहला ना one in every 3 person in Odisha is poor despite a battery of schemes माने ह्यूज स्कीम्स अछि ओडिसा रे हो किबा नेशनल ले हो पॉवर्टी इराडिकेशन रिगार्डिंग बहुत सारा स्कीम्स अछि किंतु तारो जो हमें ग्राउंड जीरो लेवल ले लागू प्रॉपर्ली ही पर वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड डोल्स बाय द गवर्नमेंट 29.35% जो रही द स्टेट पॉपुलेशन इज multi-dimensionally poverty means whole and सबु किछि पर्सपेक्टिव रे आपनकर पोर समने अछि ओके पोर 1 in every 2 person in Nabarangpur Malkangiri Koraput is below poverty line ए पॉइंट्स को आपण ऐड कर परबे ओके एठी प्रॉपर्ली जेतु मु मेंशन करनै जस्ट आपण को पॉइंट्स को आपण माइंड रे क्लिक कर परबे से मोर ट्राई रहबो कि आपण सही मेथड रे आपण पढंतु ओके जस्ट आपण क्वेश्चन करिवे देन सडन थिंक करिवे कि आपण को माइंड को क्वेश्चन टच कर सबले फोकस करिवे क्वेश्चन डिमांड ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल जीएस पेपर सेइडा ही आपण को बाकू चाहे कि क्वेश्चन डिमांड ऊपर फुलफिल करंतु तार डिमांड जहां रहिछि से जदी आपण को सिंपल एक्सप्लेन पई कहि आपण सिंपल एक्सप्लेन करिवे से जदी आपण को डिस्कस करिया पई किबा आपण को निजरो पॉइंट ऑफ व्यू शो करिया पई कहि तो आपण निजरो पॉइंट ऑफ व्यू शो करिवे तो सेठी आपण केतेले भी जदी आपण को डिस्कस करिया पई बा पॉइंट ऑफ व्यू शो करिया पई कहनथो सेठी आपण को पॉइंट ऑफ व्यू मेंशन करिवे नाही जहां कि सिंपल पचाइतो से सिंपली आपण मेंशन
सो इटा हला कि रायगड़ा कलाहांडी मयूरभंज कंधमाल केउंझर ए एरिया रे बेसिकली आपन को सिमिलर पिक्चर देखबे में मिले poverty like every 2 persons रे जने गोटे poor so the MPI revealed that okay say नवेम्बर रे गोटे आसीतरा न्यूज इंडियन एक्सप्रेस रे आई थिंक yes एई ओडिसा प्रॉपर्टी ऊपर गोटे आसीतला टॉपिक टा मोर नोट रे अछि किंतु मने पड़नी मोर एक्चुअली केते कोन very good किछि दरकार नै आपन को एबे मने पडिबार जेतो आपन नोट लिखिछन्ते निजर ओन नोट क्रिएट करछन्ते तो यस इंडियन एक्सप्रेस रे गोटे टॉपिक आसीतला ओडिसा प्रॉपर्टी ऊपर नै कि yes अच्छा सर एटा सेही फिगर उडा एना देखला बेले मने पड़छि yes yes এটা রিসেন্ট টপিক কারণ আপন যেতে রিসেন্ট টপিক বা রিসেন্ট ফিগার মেনশন করিবে সেতিকি Yes, sir. ইফেক্টিভ হবো আপন को ପାଇଁ हमर जेते भी क्वेश्चंस पड़े लाइक अपन जीएस पेपर हो जीएस पेपर अपन हिस्ट्री को तो केते रिसेंट बा तार रिसेंट हेई परिबोनी हिस्ट्री पेपर सब बेले अपन को हिस्ट्री रे ही चलतिबो तार कि न्यू फॉर्मेट नहीं किंतु जो एक्चुअली नवंबर रे नीति आयोग ता रिपोर्ट ता जो पब्लिश करथिला तापरे ई सब टॉपिक गुडा आस्तला यस यस ताकू जस्ट फॉलो करथबे तो मु कहबी कि सब बेले अपन न्यूज़ पेपर फॉलो करंतु यदि अपन ऑफलाइन फॉलो करिवे ठीक अछि ऑनलाइन फॉलो करिवे ठीक अछि किंतु गोटे घंटा अपन न्यूज़ पेपर रीडिंग रे देबे इंडिया प्लस ओडिसा को सब बेले टारगेट थिबो जहां भी किछि रिसेंट आपन को स्कीम्स आसुची जहां भी रिसेंटली आपन को जो चेंजेस होची वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शंस एक्ट बेले बेले बहुत टाइम रे हमर प्रोटेक्शन एक्ट बा एक्ट गुडी करे चेंजेस देखि पे मिले ताकू नोट डाउन करनेबे सिंपली को हिसाब रे प्रीवियस एक्ट रे कोन थिला एंड नेक्स्ट एक्ट रे कोनटा चेंज ही कि आछि ओके ये आपन को ड्यूटी रे ये आपन को क्राइटेरिया रहबो चूज करिवे केमति आपन नोट क्रिएट करिवे तो एटी जेंति फिगर गुडी को अछि 58.71% किछि माने नै आपन को एई एग्जैक्ट फिगर मने रहिबो एग्जामिनेशन टाइम रे मोस्ट ऑफ द केसेस रे देखाय छै कि 58.71% प्रॉपर्ली मने रहनी तो आपन सिंपली अप्रोक्सीमेटली 58% you can mention it or approximately 57% मेंशन करि परिबे तो अप्रोक्स वर्ड यूज करके अपन नंबर फिगर मध्ये शो करि पारे जोटा कि आपन को अट्रैक्टिव करिवो आपन को आंसर को ओके एग्जामिनर सामने रे अट्रैक्टिव करिवो ए जो नंबर्स गुडी ओके एंड ताकर मार्क्स गुडी को भलो उठिबो टू दी पॉइंट लिखिबे क्रिस्प लिखिबे एंड सिंपल लिखिबे एठी आपन को छि ऑर्नामेंटल वर्ड्स यूज करिबा नै जहा अछि टू दी पॉइंट लिखिबे तो ए सब पॉइंट्स गुडी को रहबो ता प्लस आपन को जहा भी पॉवर्टी रिगार्डिंग रीजनल प्रॉब्लम्स रहउची कम्युनिकेशन गैप रहउची आपन को देन आपन को जो ग्राउंड जीरो गैप रहउची स्कीम्स रिगार्डिंग स्कीम्स तो बहुत अछि देन आपन को रहउची हिली टेरेन एरियाज ओके एजुकेशनल प्रॉब्लम इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स इस किछि पार्ट रो हमरो जो अछि इकोनॉमिक सेमन को डेवलपमेंट बहुत अछि बाकी सब पार्ट रे आपन को डिस्पैरिटीज देखिया पे मिलुची ओके इंबैलेंस देखिया पे मिलुची सो ये गला आपन को सेकंड क्वेश्चंस जोटा कि 4 नंबर एबे हमें मूव करिवा डिस्कस द इंपोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज साइट इन इंडिया आई थिंक जस्ट एटा आपन को करंट अफेयर क्लास के नउचंती आई थिंक तकर नाम को बुझे झा सर आई थिंक झा सर बोले यस सर प्रभाकर झा सर हां तो प्रभाकर सर तो से मे बी एई पॉइंट यू कहितले मोर जा मने पडुची कि यस सर यस सर यस सर साइट बहुत पई इंपोर्टेंट बा काहे हमें हेरिटेज साइट को कंजर्वेशन करिबा बा कंजर्व करिबा से रिगार्डिंग गोटे से करंट अफेयर क्लास रे मेंशन करथि सडनली मु रैंडमली जस्ट चेक करथला को मु पाइली ओके एंड देखंतु सेही क्वेश्चन डायरेक्टली आछि लास्ट ईयर जो आपन को मेंस रे ओके डिस्कस द इंपोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज साइट इन इंडिया बहुत पई इंपोर्टेंस कोन इंपोर्टेंस रही से मेंशन करछंती तांका क्लास रे मोर जा मने पड़छि कोथि पे हमकु हेरिटेज साइट ऊपर जानिबार अछि बहुत पई इंपोर्टेंट सो वेरी लैक पॉइंट सेटा नबो जो प्रिजर्व जो करिवा डिस्कस द इंपोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन yes 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 Basically, we can give a short and crispy point about the heritage sites. Like the heritage site is that a place which preserves the cultural, social, and political history of our India. Very good. Heritage sites are the buildings which represent the past history and the culture of our nation. Then after, sir, we can go to the point according to the Indian law, sir. Which kind of laws are already working on to preserve the monuments, archaeological sites, sculptures, all the heritage sites of our country, and what are the heritage sites which are recently the deteriorations are going on because they're like Taj Mahal, sir. You can see
the Taj Mahal, the white marbles are crusting, the marble crusting are going on because of the acid rain, sir. So what are the natural causes which deterioration, which are the main cause of deterioration for the heritage sites? And also, sir, we can mention that some kind of conservation problems which are faced by our country, sir. Means why our country is lacking of to conserve the heritage sites. We can focus on that point, sir. Then also, sir, that the steps taken by our government to preserve the heritage sites. ଏତେ Uh, ଗୁଡା points mention କରିବା ଜରୁରୀ no, sir. ଠିକ ଅଛି Just I points said all ଗୁଡା this, points sir. We can ଗୁଡାକ sort it. We perfect can ଅଛି sort it, sir. ହଁ perfect ଅଛି points ଗୁଡାକ ଯେତିକି points ଅଛି the points are very crisp and very Yes, so we interesting can also. write it to the point only, sir. But I just try to elaborate something. That's why maybe it is Yes. Sir, main little thing bit is, lengthy, sir. sir, main thing is where is it important to preserve Indian heritage? First Yes. important things. Then Yes. it's mainly focus of Indian tourism also, sir. Yes, cultural perspective, tourism perspective in worldwide sector. Okay, Area worldwide of heritage discussion भी ରହିବ ସେଥିରେ. for the representation of own culture and heritage. तो सेटा रहला पॉइंट्स गुड को परफेक्टली अच्छी एंड आउ जने देखले मेसेज रे जस्ट चेक करूची आई थिंक सुबेंदु हां सुबेंदु देखिन कल्चरल इंपोर्टेंस हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस चार अछि इकोनॉमिक इंपोर्टेंस देयरफॉर द कंजर्वेशन रिक्वायर्ड वेरी गुड सेटा आफ्टरमाथ सिचुएशन ने आपन को जदी कंजर्वेशन पय देइथिबो एंड जदी व्हाट आर द पॉइंट्स इंपोर्टेंट ये एठी पचारची कोन ना डिस्कस द इंपोर्टेंस काहे की इंपोर्टेंस कंजर्व करियो हमें काहे कंजर्व करियो कि गोटे हेरिटेज साइट जो रही इंडिया रे ताको हमें कंजर्व काहे करबा तो सेतिरे आपन फर्स्ट जो तीनटा पॉइंट अछि सेतिरे ऑलमोस्ट सब किछि कंप्लीट हिजबा एंड ये 10 मार्क्स जेतु रही बाकी जो पॉइंट्स गुड अछि से भी ऑलमोस्ट आपन करेक्ट अछि यदि इवन फ्यूचर यदि ये 20 मार्क्स रो आसे तो यू कैन मेंशन ऑल द पॉइंट्स अपन माने सब पॉइंट्स गुड को मेंशन कर करके शॉर्टली फिलहाल एबे देखिबा कि डिस्कस करबा कंजर्वेशन इंपोर्टेंस कोन रही कोथि पे हमें कंजर्व करबा so move kariba next. So conservation of heritage site in India is important because conservation of heritage sites are building provides a sense to identity and continuity of fast changing world. Second point, heritage sites and buildings represents the past history and culture of the nations. ये past history को ये denote करे and culture को मध्य ये denote करे. It is important to support the tourism industry. A heritage site is a place that preserves the cultural, social, and political history of a place. As per UNESCO ranking, India is ranked 5th globally in the list of countries having the maximum number of World Heritage Sites. The heritage sites in India are protected by the ancient monuments and the archaeological sites and the Remains Act 1958, which was amended in 2010 जोटा कि पॉइंट आपण चाहिले मेंशन करिवे किबा न करिवि पारंती किंतु नोट रो आपण लिखि नेबे ओके नोट डाउन करनेबे as per this law it protected the following then heritage sites monuments archaeological sites जोटा कि अमित कहतले कि बहुत सारा एस्पेक्ट्स अछि तार पर्सपेक्टिव अछि कि बहुत सारा आपण पॉइंट को टच मते करि परबे कि को टाइप रो प्रॉब्लम्स होची केमति भाबे ताकू नेचुरल प्रॉब्लम्स कोन आर्टिफिशियल प्रॉब्लम कोन केमति क्यूरेबल हे परिबो केमति ताकू हमें एक्शन नै परिबा तो गोटे स्पेशल नोट्स करी कि जेतो आपण हेरिटेज साइट्स मेंशन करछंती गोटे एंड हां आ गोटे सिंपल कथा आपण को कहि दोची जो माने भी नोट्स करछंती निजर प्रिपेयर करछंती तो फर्स्ट ऑफ ऑल ताकू कहि भी कि एति कि आपण A4 साइज पेपर जो जेरॉक्स पेपर आसे सेति रे ही आपण नोट प्रिपेयर करो बेस्ट रहबो जस्ट गोटे फाइल मेंशन मेंटेन करिवे A4 साइज पेपर हो पूरा ताको होल करिकी आपण पंच जो होल करिकी आपण थ्रेड रे रखि नेबे सेतरे हेल्पफुल कोन रहइबो कि सडन आपण गोटे प्रिपेयर करले कि रिसेंट हेरिटेज साइट गुडी को कोउडी को यूनेस्को अंडर रे आछि कि आपण करंट अफेयर पार्ट कंप्लीट करि गेला तो गोटे पेपर रे को प्लेस गुडी को हमरा इंक्लूड हेछि यूनेस्को हेरिटेज साइट देन सेकंड पॉइंट रो कोन हबो यार इंपोर्टेंस कोन रहिछि काहेकि वी शुड प्रिजर्व एंड कंजर्व द हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया दीटा पेपर रे आपण ऑलमोस्ट कांसेप्ट पूरा क्लियर हे जिवो सो दैट आपण को करंट अफेयर सेक्शन में आसिले मध्ये किछ प्रॉब्लम होबोनी किंबा आपण को मेंस रे यारो एक्स्ट्रा नोट करिया पई मध्ये पडिबन ओके सो गोटे टाइम रे आपण को दीटा हे जिवो
तो खाता रे प्राय नोट कम यूज करिवे ट्राई करंतु कि A4 साइज पेपर रे जहाँ भी नोट करछंती ताकू प्रॉपर्ली थ्रेडिंग करिवे एंड फाइल ले मेंटेन करिवे A4 साइज पेपर रे करंतु फर्दर किछि पॉइंट्स ऐड करिवा थिबो तो से पुनी A4 साइज रे मेंशन करि कि आपण ताकू आपण जॉइंट होई करिवे ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिवा नेक्स्ट क्वेश्चन होती discuss the density distribution pattern of population in एटी कोन पचाची 20 मार्क्स पई पचाची 250 वर्ड्स भितर सर सब को करंट अफेयर रो आसी क्वेश्चन आई थिंक लास्ट ईयर जो हमें पैटर्न देखिबा population of India map and distribution pattern we have to write or okay Sumendu I will come to you सब करंट अफेयर रु प्रायतः बे आसु ओके जेहेतु आउ किछि पेपर करंट अफेयर को कवर करू नाही हमर जीएस पेपर खास करी की चांस रहउची कि करंट अफेयर को कवर करिवो से चाहे आपन को जीएस पेपर 2 रो इंटरनेशनल अफेयर्स हो किबा आपन को इकोनॉमिक्स हो जहाँ भी अछि बा साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो ओके इन्वेंशन हो बा इसरो रो जहाँ भी किछि इन्वेंशन अछि आपण धरि की चलंतु मानि की चलंतु कि जीएस पेपर 1 एंड 2 हिस्ट्री पार्ट को छाडी देला परे आपण को ज्योग्राफी पार्ट पॉलिटी पार्ट से करंट रेलेवेंट पॉइंट को नेकी से माने पछरे मींस आपण को स्टैटिक पॉइंट रहइबो प्लस करंट रहइबो जेंति आपण यूपीएससी लेवल ले देखिया पई पांती सेंति आपण को सिंपल मैनर रे यूपीएससी रे टिके डीपली आपण को स्टडी करिया पई पड़िबो किंतु ओपीएससी रे लगभग आपण 60 to 70% मैच करके ताको पढिबे से लेवल ले पढिबे सो दैट आपण को मेंस रे ऑलमोस्ट सब दिन से सेम पैटर्न से सेम सब किछि किंतु आपण को पॉइंट्स कम लिखिया पई पड़िबो ओके तो ट्राई करिबे कि सब करंट अफेयर से तो रेलेवेंट है कि पढिबे खाली एक्सेप्ट हिस्ट्री को ओके देन इट कोंतु कि डिस्कस द डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया तो गोटे जिंस माइंड रखिथिबे कि आपन को एक्स्ट्रा पॉइंट कहि दोची आपन एग्जामिनेशन जिबा पूर्वरु थोरोली क्लियर करथिबे सेंसस को ओडिसा रो एंड इंडिया रो थोरोली चेंजेस केमति भाबरे हेची लास्ट ईयर बा लास्ट सेंसस तुलना रे चेंजेस केमति भाबरे हेची हमर सेंसस गोटे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपन को पचा दोची कि हमर सेंसस केबे स्टार्ट हेतला रेगुलर सेंसस हिस्ट्री क्वेश्चन टी एंड ए क्वेश्चन 2011 से मध्य ना 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 हमर फर्स्ट केबे स्टार्ट हेतला रेगुलर सेंसस नो आइडिया सर हिस्ट्री क्वेश्चन एक क्वेश्चन डायरेक्टली आसे एक क्वेश्चन डायरेक्टली आसे एंड सिंगल वर्ड ऑप्शन में आसे आपन को एंड 1872 रे से रिवील हेतला व्हाट इज सेंसस बा सेंसस रो क्राइटेरिया बा सेंसस हमें काहे की करबा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड मायो ओके देन फर्स्ट रेगुलर सेंसस केबे टू स्टार्ट ला ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड रिपन 1881 ओके देन ग्रेट डिवाइडिंग ईयर जोतरे आपन को बहुत सेंसस कम कम होतला किंतु सडन पिकअप करनेला आपन को पॉपुलेशन केबे 1921 1921 सेंसस रे आकलन कराला कि ग्रेट डिवाइडिंग पीरियड ताकू कुआ जाय एई तीनटी क्वेश्चन आपन डायरेक्टली पाई जिवे जदी एई वर्ष आसीनी नेक्स्ट वर्ष आसीबार चांसेस होची कारण एई तीनटी क्वेश्चन आपन को डायरेक्ट पाइबे एई तीनटी क्वेश्चंस प्रति एग्जामिनेशन प्रति स्टेट बोर्ड में आपन को जो रही स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन रे कॉपी एंड पेस्ट हुए या छोड़ा किछि चेंजेस हुएनी से ऑप्शन सेम थिबो आपन कर से क्वेश्चन मते सेम थिबो ए तीनटी क्वेश्चन स्टार्ट के बेहितला ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड मायो 1872 फर्स्ट हमें जानलु कि अबाउट सेंसस देन रेगुलराइज के बेहला ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड रिपन इन 1881 आपन को सेतले फास्ट फैक्ट रिएक्ट ए सब हिस्ट्री पार्ट रे आपन माने कवर करनेबे सेति हम आपन की ऑब्जेक्टिव आपन थोरोली क्लियर करबा दरकार ओपीएससी दोछंती ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गुड को थोरोली क्लियर करिवे देन सब्जेक्टिव भी तो आपन को साइमल्टेनियसली चलिबो से आपन यूपीएससी टाइप प्रिपेयर करिवे किंतु ऑब्जेक्टिव वाइज भी आपन को माने थोरोली क्लियर करिया दरकार सेटा हबो केमती आपन जदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो करथिबो सैंपल क्वेश्चन केबे भी फॉलो करिवेनी ऑलवेज गो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर ताकू को सॉल्व करबे ताकू पूरा माइंड रे पूरा फिक्स करके रखने ओके माने सेही डाटा रु जेंति भाबरे क्वेश्चन आसीले सेही डाटा रु आपन को सेव डाटा रु जेंति गोटे भी मिस न हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपन एते बार प्रैक्टिस करथिबे आपन को जेंति भाबरे क्राइटेरिया कह दितली एमपी पीसीएस हो छत्तीसगढ़ पीसीएस हो बिहार पीसीएस जते भी पीसीएस क्वेश्चंस रहउची पीएससी क्वेश्चंस रहउची ताको आपन
फ्री टाइम रे ताकू सॉल्व करिया पई चेष्टा करू ओके ए तीन क्वेश्चन आपण पाई गले ए तीन क्वेश्चन रिपीटेड मैनर रे आसे ग्रेट डिवाइडिंग इयर्स ओके कंटीन्यूअस सिंक्रोनियस सेंसस के स्टार्ट हितला ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ व्हिच गवर्नर जनरल और वाइसरॉय बेसिकली वाइसरॉय नॉट गवर्नर जनरल एंड दैट्स इट सो एठी हम कोन डिस्कस द डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन इंडिया एतरे कोन इंपोर्टेंट इंडिया रो को डिस्ट्रिक्ट सॉरी स्टेट रे आपन को डेंसिटी को टाइप रो देखिया पय मिले देन तारो पैटर्न्स कोन रहिची देन तारो कॉजेस कोन रहिची ए सब या ऊपर डिस्कस करिवे विद इन 250 वर्ड्स लिमिट तो यार सैंपल आंसर को हमें मु भाबुची मूव कर जिबी ओके सो दैट आपन को बुझिया पय इजी हबो देखो 13 नंबर क्वेश्चन throughout the country India's highly uneven pattern of the population distribution ये आपन को जो population map अछि उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन फॉलोड बाय महाराष्ट्र सिंपल ये सेंसस रो डायरेक्ट आछि आपन जदी थोरली पढिथिबे सेंसस डायरेक्टली आपको आपन लिखि परिबे देन टर्न क्लाइमेट Should I draw the map? no need to draw the map because if you are trying to draw the map it will take much time to cover these questions so एथिरे आपण मैप ड्रॉ करबा दरकार नै कारण एथिरे मैप रो किछि आवश्यकता नै फॉर योर आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर योर क्लियरेंस मु मेंशन करछि मैप रे जस्ट आपण देखि परिबे कि को स्टेट रे केतेरा रहउछि पॉपुलेशन सो खाली पॉइंट्स गुडा को फॉलो करंतु like terrain climates and availability of water largely determine in the pattern of the population distributions however the socio-economic and historical factors are affected the pattern of population as per 2011 census urban population of India was 31.16%. The detail of the major urban center is illustrated in the following map. And as per the census 2011, the annual population growth rate is 1.64%. The density of population is expressed as the number of person per unit area. ये गोटे आपको देखिया पे मिले स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इकोनॉमिक रे आपको देखिया पे मिले व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी तार डेफिनेशन को आईएमआर एमएमआर यार डेफिनेशन आपको डायरेक्टली पड़े ओके मु कहि देबी कोगुडी को डायरेक्ट क्वेश्चन आसे कहि देबी सेही गुडी को डायरेक्टली पड़े ताको आ किछि चेंजेस करी पकांतिनी आईएमआर डेफिनेशन रिलेटिव पॉवर्टी एब्सोल्यूट पॉवर्टी रे डेफिनेशंस ओके ताको आपण डायरेक्टली थोरली मन रखिथिबे मिक्स्ड इकोनॉमी देन आपण करो इकोनॉमी रो टाइप रो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन जो रही इकोनॉमिक्स से गैलोपिंग इन्फ्लेशंस डायरेक्ट क्वेश्चन एथुरा आसे तो से हिसाब रे आपन को डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी तारो मापिवार जो क्राइटेरिया रही द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया एज पर 2011 census 382 persons per square kilometer Bihar with 1102 people per square kilometer is the most densely populated state in India followed by West Bengal इतकी आपको फिगर अछि देन जो रही फिजियोलॉजिकल डेंसिटी जो रही एग्रीकल्चरल डेंसिटी कोठी देखा जाय एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन कोठी देखा जाय देन गोटे पर गोटे पॉइंट रे आपण मेंशन करिवे ओके सो ये डायरेक्टली आस्तला आपन सेंसस रो यदि आपण सेंसस फॉलो कर देथिबे सेंसस रो डायरेक्टली एठी आपण लिखि परिवे फर्दर आपण जो नॉर्दर्न साइड रे नॉर्दर्न बेल्ट रे आपण जो प्लेन एरिया रही काहे कि सेठी पॉपुलेशन गोटे डेंसिटी देखिया पे मिलेबा पॉपुलेशन हायर परसेंटेज रे देखिया पे मिले यदि आपण फॉलो करथवे ओएस रो लास्ट ईयर क्वेश्चन बा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुडी को सेते प्राय गोटे क्वेश्चन आस्तला कि हमरो गंगा रिवर पाखा पाखी एरिया रे काहे कि पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट हुए ओके से क्वेश्चन जस्ट मॉडिफाइड वर्जन को माने कोन कहचंती ना सेंसस को जस्ट इंक्लूड कर देकी एथर पके दैछंती से क्वेश्चन गोटे रिपीटेड मैनर रे आस्तला कि व्हाई गंगा रिवर पाखा पाखी एरिया रे काहे कि पॉपुलेशन इंक्रीज हुए बा अधिका देखिबा पय मिले अधिक देखिबा पय मिले सो एनीवन काहर किछि नॉलेज अछि कि गंगा रिवर एग्रीकल्चर देन So agriculture for the farming and also the poultry sir also they can communication like sir they can domesticate animal there sir like cow yes. and buffaloes alluvial soils waterways yes sir okay. due to the plain तो सेठी आपन प्लेन एरिया सेठी आपन को ट्रेन जो रूट अछि सेठी हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रेन रूट अछि कारण आपन जानजंती कि हिली एरिया रे ट्रेन रूट गुड को भलो रे वर्क करि परिबनी सेति पे नॉर्दर्न आपन को गंगा रिवर साइड रे
आपन ट्रेन रूट गुडी को बहुत ही ह्यूज एक्सटेंसिव वे रे देखिया पे मिले कोत पे जेतु से प्लेन जो लैंड रहिची एंड जेहेतु आपन कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली रहउची आपन एक्सटेंसिव पॉपुलेशंस रहिबो डेंसिटी रहिबो देन आपन एग्रीकल्चर्स रहिची बहुत सारा डेवलपमेंट होते सिटी हो वाटर वेज रहिची नेशनल वाटर वेज जा थ्रू रे से जो हम कार्गो थ्रू रे से गुड्स को सप्लाई करि पाछथि So these are the points जोटा कि आपन 2019 हो किबा 2015 16 ए सब एग्जाम ए सब ईयर गुडी करे देखिया पे मिलतला रिपीटेटिव मैनर रे जस्ट कोन करले ताको जस्ट टिके चेंज कर देले एंड टेक्निकलिटी ऊपर को चली आसिले डायरेक्टली सेंसस रो क्वेश्चन टी से माने पके देले एंड सेंसस निहाती बार मु रेकमेंड करबे कि सेंसस आपन एग्जामिनेशन पूर्वरु थोरली पढी कि जिवे ओडिसा सेंसस एंड इंडियन सेंसस निहाती बार क्वेश्चन आसे सेतिरे प्रीलिम्स रे move परिवा next होची what are the major causes of regional imbalance in India regional resource utilizations and resources related आपन geography part रो इस सब regional imbalances in India what are the major causes historical causes geographical causes or Yes. in sir some cases of political imbalance sir like Yeah. some new party came they make a new kind of rules regulations Yeah. and also sir we can add some kind of green revolutions like that Very the good. policies implemented by the government for the farming for the agriculture and also sir that the population strength varies sir according to that So the India land just a minute your points are too good I appreciate it points Yes, sir. to the point of shape and just खाली मतलब खाली just information out of the context India followed the green revolution from which country and who is the father of green revolution in international level and in India who is the father of green revolution in India Sir Swaminathan, sir, MS Swaminathan, in is India, the sir. founder of green That revolution in India he bought the first wheat concept wheat high yielding wheat, variety of seeds yes sir wheat seed he first born sir. yes so followed from which country and who is the actual founder of actual The country I'm not sure sir but I think you Mexico okay Mexico yeah European Mexico रे country first yes हेतला and तार फाउंडर जे होचंती नॉर्मन बोरलैग नॉर्मन बोरलैग and I think हमर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन व्हाइट रिवॉल्यूशन फाउंडिंग फादर की होचंती के फाउंडर व्हाइट रिवॉल्यूशन Kurian, G.C. Kurian, वर्गेशी कुरियन Burgess Kurian, yeah. Founder of the Amul milk. yes ताको इनिशिएटिव फॉलो रे जो ह्यूज इंडस्ट्री अमूल ही तापर सस्टेन करि पाछि एंड बहुत लार्ज अमाउंट रे से स्केल करछि इंडियन मार्केट रे कवर कर ओके सो एमति किछि ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स गुड को सबले माइंड रे सबले ई ऑब्जेक्टिव पॉइंट रु जेंति आपनकर गोटे भी भूल न होय देन सब्जेक्टिव मैनर तो समस्त पढंती किंतु ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ने जे क्लिक करि गला फास्ट अपन जदी डिवाइड कर देबे ओके नेक्स्ट टाइम जे कंप्लीट ही जाऊ हमें डिस्कस करिवा ओके केमते बार क्लिक करबे फिल्म रे so what are the major causes of regional imbalance so ये सब पॉइंट्स गुड लाइक अमित पूरा डायरेक्ट पॉइंट गुड को उठे चंती so I think आउ जो माने देबे किछि जदी एक्स्ट्रा पॉइंट्स जोड़िया पे चाहउचंदी इंक्लूड करंतु लाइक माधुरी आशुतोष शुभेंदु प्रदीप दिव्यज्योति अनुपम एंड बाकी जो माने भी पार्टिसिपेट करनते प्लीज पार्टिसिपेट so these are the problem there are many problems but I selected the 14th important problem sorry 9 important problem like the number जो क्वेश्चन है 14 नंबर हिस्टोरिकल कॉजेस रही ब्रिटिश पीरियड रे जो इंबैलेंस से क्रिएट करते लाइक से जो कोलकाता रहिले मद्रास प्रोविंसेस रहिले ओके खाली सेति की एरिया को से डेवलप कर ले खाली सही पार्ट को से डेवलप कर ले बाकी पार्ट को से टच कर ले बाकी पार्ट को से जस्ट कंट्रोल ले रखले से गुडी को सब किंगडम माने किंग्स माने रूल करले ताको जस्ट कंट्रोल ले रखले किंतु डायरेक्ट ताकर जो रहितला से कोलकाता अपन वेस्ट बंगाल जो ये कोलकाता खास करी देन मद्रास प्रोविंसेस देन एई पार्ट रहला आपनकर पंजाब एरिया रे किछि पार्ट रहला
then geographical causes जो रही geographical imbalance को पार्ट आपको resources को available बहुत मिलती like छोटनागपुर प्लेटू रे आपको बहुत सारे resources minerals resources देखिया पे मिलो किंतु बाकी सब लद्दाख एरिया रे इतने किछि resources नहीं सेतिर आपको regional disparities होची economical backwardness economical development हे करनी सही related to रही geographical causes means भिलाई ही जो आपको झारखंड एरिया ही जो तरह प्लांट्स गुडी को बहुत सारा देखिया पे मिलची सो दैट आपन कम्युनिकेशन लोक माने बहुत सारा डेवलपमेंट करछंती रहउछंती सेठी स्केल करछंती किंतु बाकी जो एरियाज रहिला लाइक हिली एंड टेरेन एरिया रहिला जो हमर नॉर्थ ईस्ट एरिया रहिला सेवन सिस्टर्स एरिया रहिला सेते डेवलपमेंट ही पारु नहीं फेलियर ऑफ प्लानिंग मैकेनिज्म फेलियर ऑफ प्लानिंग मींस किछि किछि प्लान्स हमरो करा होची जो प्लान्स केवल मात्र गोटे गोटे प्लेस को लेके सुटेबल होची बाकी सब प्लेसेस रे सेउडी को भलो भाबे इंप्लीमेंटेशन ही पारु then political instability जो तांकर गोटे टारगेट थाई गोटे सॉफ्ट कॉर्नर थाई बा सॉफ्ट ग्रुप थाई से ऊपर ही तांको केवल मात्र टारगेट करके से माने इंप्रूवमेंट देखेबे बाकी सब रे तांकर आउ किछि मेकानिज्म काम करेनी रोल ऑफ फाइनेंस कमिशन आपण जानजति फाइनेंस कमिशन हां फाइनेंस कमिशन रिगार्डिंग आपण आज पढी नैतिबे टिके जस्ट फाइनेंस कमिशन ये आपण को रिलेट करछि इंडियन पॉलिटी सेक्शन तो जानजति शंकर सर नउछन्ती आपण को किंतु अपना जस्ट आज ओवरलुक करने थे फाइनेंस कमिशन म्हणजे व्हाट इज फाइनेंस कमिशन एंड देयर आर फॉर्मेशंस एंड तार कोन रही फंक्शंस कोन रही ये तार हेड so this can be basically like that in some several states there are variation of taxation sir like yes. the government giving relaxation on the taxes sir so this can it be comes under the economical backwardness and okay. Yes, sorry, sir. Or this comes under the economic backwardness or you can add it in the finance commission or planning failure of planning mechanism एथिरे आपण इंक्लूड कर परबे गुड पॉइंट ता सेटा टैक्सेशन डिफर करूची ओके जोतिर आपण हाई टैक्स निया होची सेतिर डेवलपमेंट भलो भाबरे कर similarly if we say sir in current scenario sir that the petrol price sir in several states sir they are means reducing they are taking over that excise duties the state excise duty but some states are not doing that sir so people are point also is sir good your point is good but I don't think ki point to mention kari ba kariba darkar karan physical way जदि हमें देखिबा कि एटा करंट पूरा डायरेक्ट करंट को चली आछि या द्वारा लॉन्ग टर्म रे आपन कुछ चेंजेस देखिया पे मिलुनी लॉन्ग टर्म रे कोटा आपन गवर्नेंस जदि ठीक नथिबो ज्योग्राफिकल इंटेंशनल प्रॉब्लम थियो मींस जोटा कहली कि डेक्कन प्लेटू हो किबा छोटनागपुर प्लेटू हो सेतिर आपन को ऑटोमेटिकली रही आछि सेतिर आ कुछ चेंजेस आपन करि परिबेनी खणी जदि रही आछि तो रही आछि ओडिसा रे खणी अछि मींस अछि ताको आपन कहि परिबेनी कि नॉर्थ ईस्ट साइड रे मध्ये खणी ही जाउ जोटा कि प्राय जो रही आछि सेही हिसाब रे हबो इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस जोटा हम क्रिएट करूछु जोटा कि अपन जोटा कि लास्ट पॉइंट अछि देन इंक्रीज्ड फोकस ऑन जियोग्राफिकल बैकवर्ड एरियाज मैं मोस्ट ऑफ द केसेस रे कोन करू गोटे गोटे स्कीम लागू कर दू लाइक केबीके योजना रे हमें बहुत सारा मींस फंडिंग तो चलछि किंतु ग्राउंड जीरो लेवल रे सेमति किछि ह्यूज इंप्रूवमेंट देखिया पई मिलुनी बहुत वर्ष धर की चलछि किंतु देखिया पे मिलनी खाली इंक्रीज द फोकस ऑफ जियोग्राफिकल बैकवर्डनेस को लेके से माने मिस इंटरप्रिटेशन करथि तो जदि डिटेल मैनर जिबा हिस्टोरिकल फैक्टर्स लाइक जोटा कि म कहथि कि ब्रिटिश रूलर्स माने कोन करले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करले लाइक कोलकाता मुंबई एंड चेन्नई एटा तंकर हब थिला जो तीनटा हब थिला खाली सेति के से माने डेवलप करके बाकी सब से माने फर्दर आउ प्लेसेस को गलेनी तो सेतिर हमर हिस्टोरिकल फैक्टर से वाला पॉइंट जियोग्राफिकल फैक्टर कोटा रहला जियोग्राफिकल फैक्टर प्लेज एन इंपोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज डेवलपिंग इकोनॉमी द डिफरेंट टेरेन शुड जो हिली एरिया रिवर्स रहिछि like most of the Himalayan state in India like Himachal Pradesh northern Kashmir the hill districts of Uttar Pradesh Bihar Arunachal Pradesh and other northeast states remain mostly backward due to the inaccessibility to the communication gap marriage locational advantage re are the playing the important role in the determining the development strategy जदि आपण याकू लोकल एग्जांपल जोड़िबे ताले आपण सिंपली नहीं जानतो हमर कैपिटल भुवनेश्वर एबे जहां भी किछि डेवलपमेंट होची लाइक भुवनेश्वर किबा ता पाखापाखि टेरिटरी बा एरियास रे होची बाकी सब पोर्शन को समस्त लोक भूली गलेनी किबा गवर्नमेंट भी भूली गलानी खाली जस्ट आखि दृश्य से डेवलपमेंट करछंती से भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी हो से भुवनेश्वर सब किछि से भुवनेश्वर ही कर दोछंती बाकी सब एरियास गुडी को सेमते भरे लैक करके रही होची तो सेत्री आपन डिस्पैरिटीज बा इंबैलेंस देखिया पे मिलची तो लाइक इनएडिक्वेट इकोनॉमिक ओवरहेड्स
particular region like banking कोथरे सुविधा अछि technological सुविधा like Mumbai महाराष्ट्र जो महाराष्ट्र region रहिछि Delhi region रहिछि सेते आपन technically चंडीगढ़ रहिछि technically आपन साउथ एरिया रहिछि technically से strong technology wise किंतु बाकी जो एरिया रहिछि नॉर्थ ईस्ट एरिया रे technology जमारू एते इंप्रूवमेंट करिने तो सेतिरे गोटे इनएडिक्वेट इकोनॉमिक ओवरहेड्स रहिछि देन एजुकेशन मध्ये एतरे रोल प्ले करे देन फेलियर ऑफ प्लानिंग मेकानिज्म जोटा कि होल एंड सोल जाय आपन को रिस्पांसिबिलिटी गवर्नमेंट को ओके मु आपको क्विकली सर्च सो दैट आपन को कंप्लेंट सब बा जा किछ प्रॉब्लम थिबो सेटा को मु डिस्कस मध्ये कर परबी तो ताको मु क्विकली सर्च ओके मार्जिनलाइजेशन ऑफ इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन जोटा कि अमित रो उठेतले एते जस्ट अमित उठेतले जोटा कि ग्रीन रिवोल्यूशन फल रे कोन हला कि नॉर्दर्न साइड रे केवल मात्र डेवलप करले जो फार्मर्स मान थिले बाकी जो पोर्शन है सेमने डेवलप करि पारले नाही ओके ये गोटे हला डिस्पैरिटीज क्रिएट हला एंड नॉर्दर्न साइड रे बेसी भलो ओवर हाई वेराइटी ऑफ सीड्स द्वारा चाष हला किंतु बाकी सब एरिया रे ही पारलानी सो देन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जोटा कि से माने गोटे गोटे ग्रुप ओरिएंटेड है कि बैकवर्ड रीजन्स को नेकी से माने टारगेटेड एरिया को नेकी से माने डेवलपमेंट करंती सो दैट बाकी एरिया को से माने एक्सक्लूड करती ओके देन हमें जिका नेक्स्ट क्वेश्चन जोटा कि लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास 70 number question justify the statement that 80 आपण प्लस माइनस आपण को जहां भी ओपिनियन से ताको ऐड कर परबे 20 मार्क्स अछि 250 वर्ड्स अंडर है justify the statement human resource development is the foundation of nation development ओके तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भलो भाबरे मन रखि देबे कि महबूब उलक देथिले कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिगार्डिंग जो कांसेप्ट तो हम क्विकली मूव कर दिबा सैंपल आंसर रखु एटी आपण को डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल रहइबो definition gala definition for the human resources development is a continuous process that focus in the improvement the quality of skill and performance of manpower which helps to accelerate the rate of the country development. The human resource development insists to prepare a sustainable human resource development plan and its effective implementation as required to changing the circumstances and demand of the country. It helps to encourage the people to use their potentiality for the development of their native country. Okay. So in any organization, human resource development or human resource is one of the many but important resource necessary for the development. HRD by human resource development is the process of providing training to the existing human resources to make them skilled and capable and sustain them in the future market. Okay. ये whole and sole purposes roichi the sum of the resources produced by HRD are competent and help to eradicate the problems of the countries like lack of manpower for work, poverty, unemployment, brain drain. Acha, who gave the theory of brain drain? Who gave the theory of brain drain? Direct question from economy. Direct question गुड को मिस करंतु नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन गुड आइदर नोट डाउन करनियंतु गुड स्पेशल नोट करकी ब्रेन ड्रेन थ्योरी हमर के देखले ये आपको हिस्ट्री रे मध्ये आसे इकोनॉमी रे मध्ये आसे दादा भाई नरोजी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ब्रेन ड्रेन थ्योरी ओके सो दैट्स इट and set is last भलो देखन कि मोर सो आई स्टे विथ द स्टेटमेंट एठी आपन को निजो ओपिनियन आपन मेंशन करि परिबे सो आई स्टेट और एज पर मी आपन लिखि परिबे अकॉर्डिंग टू मी so this point is more relevant or this point is correct that human resource development जो रही आपन क्वेश्चन में थिला that human resource development is the foundation of nation's development ए भली भाबरे आपन जस्टिफाई करि परिबे so that's it for today and एबे जहा कि आपन को डाउट अछि 10 मिनिट्स से क्विकली आपन पचारतु रिगार्डिंग प्रिपरेशन ओके देन हमें क्लोज करिबा आज सेशन सर जो the main HRT and the HRM, human resource development and the management, what is the difference in between that, sir? human resource Development and management, sir. Okay, so development is the whole and sole purpose, means development from low level to high level development. Management just to see the financing structure, see the technicality structure. So management
is different from that process. If you take the human development as a whole house, then management is how to distribute all the works. Okay, there is difference. If you take the human development as a factory, then the machineries, that working process of machineries is the management of the human development. Okay, that is the basic difference. Not much harder for you to distinguish that question. Okay, I think Asutosh comfortable. सर ये जो मेंस रो क्वेश्चन आउस बेसिकली मतलब होती कि 2-3 मंथ्स रो करंट अफेयर रा बेसी फोकस होउछ माने Yes, जेबे of course. मेंस होउछ तार 2-3 months नुहे आपनको वेबसाइट टू ट्राई करिया पई कहबी कि 1 year रो. ओके, सो दैट आपनकर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन भी ही जिवो कंप्लीट, मेंस एग्जामिनेशन भी कंप्लीट हो जिवो. ओके, सब बेले मन रखिथि कि गोटे ईयर रो आपन वेबसाइट टू नै जिवे, से नेशनल लेवल हो किबा स्टेट लेवल हो. कारण जेतेला क्वेश्चन पैटर्न री करा होची जो हमरो क्वेश्चन टी आसुची 2020 मेंस 2021 जो हमरो आसीबो, तो सेतिरे आपण देखिबे 2021 ओएस मींस 2021 रो आपन को करिया पई पड़िबो. 2021 रो जो वर्ष रे आपन को करंट अफेयर को इंपोर्टेंट थिला ताकू प्लस एग्जामिनेशन जदी अछि आपनकर सितंबर रे, तो आपण लास्ट मंथ जोटी एंड करिवे करंट अफेयर रो सेटा होची आपन का अराउंड जुलाई पर्यंत, जून किबा जुलाई पर्यंत आपण एंड करबे आ अगस्त को आपण मूव करिवे. तो ट्राई करबी कि सब बेले गोटे वर्ष रो आपण करंट अफेयर कलेक्शन करिवे. मैं जेमति कि 2023 रे हम एग्जाम दवा तो 22 रो सेटा एग्जाम होबो 22 रो हबो. तो आपण को टारगेट रहबो कि 22 वर्ष रो जेते सब करंट अफेयर अछि ताको आपण कैप्चर करबे. कारण Sir, from which month to which month, sir? देखो मु गुरे ऑन एन एवरेज कहि दोछि कि जदि हमर सितंबर एग्जाम होछि लाइक एई वर्ष हबो सितंबर एग्जामिनेशन, तो हमको प्रिपेयर करियर अछि एई वर्ष देखला 2022, तो हमको प्रिपेयर करियर अछि 2021 नो सितंबर रु नै कि 2022 रो जून एंड जुलाई पर्यंत. ओके, सेतिकी रे आपनकर कवर हे सब किछि, या फिर आपण नै परिबे अगस्त वर्ष जो अधा रही अगस्त रो सेट जून जुलाई रु नै परिबे. आपण कैपेसिटी हिसाब रे जदि आपण इंटरेस्ट हिसाब रे आपण नै परिबे. मु तो कहबी कि आपण नियंतु जून जुलाई रु नियंतु, जेबे भी आपण को एग्जामिनेशन हबो प्रीवियस ईयर रो आपण 1 ईयर धरि के आपण नै परिबे करंट अफेयर. तो देखिबे नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज जोटा रहउची जोटा कि कम्युनिटी ऊपर बेस करची, जोटा कि मास पॉपुलेशन ऊपर बेस करची, जोटा कि सब जोथरे पॉपुलेशन इफेक्ट हेबे. मींस आपनकर एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो, मींस आपनकर जो रिलेटेड एनवायरमेंटल पोल्यूशन रिलेटेड इश्यूज हो, जोटा कि मास पॉपुलेशन सेथरे अफेक्टेड होंती. किछि सेमति स्कीम लागू होई छि कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल दे से देखिबे आपनकर वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स किछि लागू होई छि कि चिल्ड्रन स्पेसिफिक स्कीम किछि लागू होई छि कि पॉवर्टी इराडिकेशन पई हेल्थ सेक्टर किछि स्कीम लागू होई छि कि एम जस्ट जस्टिफाई करिवे सब क्राइटेरिया जति करंट अफेयर चूज करिवार. धीरे धीरे सब कुछ क्लास रे क्लियर कर देबी गोटे गोटे पॉइंट रे, सो दैट आपनको नॉलेज हे जिवो. आपण जेते पर मैगजीन देखिबे गोटे करंट अफेयर गोटे ऑनलाइन मैगजीन भी देखुछंती, आपनको माइंड क्लिक हे जिवो कि मते एई पॉइंट्स को नै कि मते सिलेक्ट करिवार अछि क्वेश्चंस. तो गोटे लिमिट को चली आसबो एंड इंपोर्टेंट करंट अफेयर मध्ये आपण चूज करि परिबे. आपण टोटल करंट अफेयर न पड़ी. सर 2016 में भी गोटे क्वेश्चन आस्तला कि राउरकेला स्टील प्लांट रो एक्चुअल जियोग्राफिकल लोकेशन यस, मेंस रे तो केमिति से ताकू केमिति अप्रोच करिया माने केमिति सॉल्व लिखा करथि. जिवा आंसर लास्ट हमर जो बैच तला सेते मु सॉल्व करथि. हमर जो मेंस चलतला मेंस प्रिपरेशन पूर्वरु से सॉल्व करथि. एक्चुअली से क्वेश्चन टी प्राय थिला आपन को राउरकेला स्टील प्लांट ता लोकेशन को केमिति जस्टिफाई करू. ता लोकेशन वाइज अछि तारो मींस से मिनरल बेल्ट अछि, तारो जो कम्युनिकेशन रही छि रेलवे कम्युनिकेशन से मुंबई विशाखापट्टनम सहित डायरेक्टली अछि. सो मेट्रो सिटी सहित डायरेक्टली कनेक्टेड अछि.
एंड पाखापाखि एरियाज रे आपनकर मिनरल बेल्ट अछि तो से पाखापाखि एरियाज रो आपनको रॉ मटेरियल मिल जाउची रॉ मटेरियल मिल गला पर आपनको नेक्स्ट स्टेप कोन रहइबो आपन गोटे प्रोडक्शन कला पर आपन ट्राई करबे कि ताको मार्केट रे स्केल करबे तो स्केल पई आपनको कम्युनिकेशन मिल जाउची रेलवे कम्युनिकेशन जोटा कि मेट्रो सिटी को डायरेक्टली जोडुची सेति पई आपनको प्रॉफिटेबल रहउची प्लस आपको जहाँ भी स्क्रैप जो कार्बन ये सब बाहर से गुड़िक सब आपंकर प्लांट रिफाइनरी जो आप सार कारखाना जो रही राउरकेला पाखापाखि जो सार कारखाना से यूज हो फ्रॉम प्रोडक्ट 1 टू आपंकर स्क्रैप प्रोडक्ट जोटा कि जोटा आफ्टर यूजेस ऑफ मल्टीपल यूजेस ऑफ दैट प्रोडक्ट जो बाय प्रोडक्ट भी बाहर से गुड़िक लग जाए तो तार जोग्राफिकल लोकेशन से हिसाब रे हेल्प करछि ईब नदी पाखरे अछि ईब नदी रो आपन को वाटर मिल जाउछि जोटा कि आयरन एंड स्टील पई बहुत ही दरकार पानी ओके देन हमको रॉ मटेरियल पई हम मिनरल बेल्ट अछि झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ एई सब एरिया रे प्रॉपर रॉ मटेरियल अवेलेबल हे जाउछि कम कॉस्ट मिलुछि हमर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो रहउछि कम कॉस्ट हे जाउछि प्रॉफिटेबल रहउछि देन हमें जेते प्रोडक्ट को बाहर करबा ताको पुनी बिक्री करबा तो बिक्री करिया पई हमको बड़ बड़ सिटीज मेट्रो सिटी सहित कनेक्शन दरकार से हमको रेलवे लाइन जो गुडी अछि से डायरेक्टली कनेक्ट करछि विशाखापट्टनम मुंबई ए सब लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर सर यस यस तो सब किछि अवेलेबल हे होछि सेटा ता पई प्लस पॉइंट रहिछि जोथिरे राउरकेला स्टील प्लांट बहुत ही फ्लोरिश करूछि यस सर जस्ट थिंक अबाउट द बिग पिक्चर don't go through the point wise question for Raurkela steel plant they are taking iron ore from Boladi cell mines yeah it is very nearer to almost 80 kilometers from that plant जदि आपन को सपोज आपन होचंती मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रे एंड आपनकर जो रिक्वायरमेंट रहिछि से मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट रो आपन नेबे तो सो मच डिफरेंसेस ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आपन को देखा जिवो डिस्टेंस बहुत बढ़ी जाउछि तो आपन को ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस रे ही तो सब किछि चल जिवो रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन करिवे एंड आई थिंक यस ज्योग्राफी ऑप्शनल जो मन नेबे ताकर गुडे थ्योरी भी अछि रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट रिगार्डिंग देखि तो सेगुडी कर तो हम ऑलमोस्ट बहुत सारा पैसा लॉस हे जिवो तो लाभ कोन हबो अपन स्टील प्लांट ते करिवे किबा किछि भी प्लांट करिवे तो सेति में जोठी माने प्लांट थाए से पाखरे जोडी मिनरल से प्लांट मिनरल सेति से माने प्लांट बसन सो दैट ताको मिनरल कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम मिलिबो कम पड़िबो प्लस से माने देखियो कि प्लांट रो जेतरा स्ट्रेटेजिक पोजीशन चूज करा जाय तार मेनली तार रॉ मटेरियल्स एंड पावर सप्लाई yes पावर सप्लाई एंड कोल सप्लाई को नेकी करा जाय now दी टाइप रो इंडस्ट्री आपण लिसन जो भी आपण जदी ज्योग्राफी ऑप्शनल आपण रखु जदी फ्यूचर रे आपण पढिबे थ्योरी रे कोन मेंशन अछि टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स देखिया पय मिले इंडिया रे तार थ्योरी इंडिया हो वर्ल्ड सेक्टर रे गोटे होछि वेट लूजिंग इंडस्ट्री गोटे होछि वेट गेनिंग इंडस्ट्री वेट लूजिंग इंडस्ट्री कोटा वेट लूजिंग इंडस्ट्री हमर रॉ मटेरियल जो आयरन ओर से वेट लूज करला पर जहां भी किछि पाइबा हमें सेटू आयरन ओर रु बाकी सब स्टोन ए सब रॉक्स रे चल जो बाकी जो रॉ आयरन टे होछि सेटा वेट लूज करला पर ही मिलिबो आउ वेट गेनिंग इंडस्ट्री कोटा लाइक यू कैन से द कोका कोला प्रोडक्ट और ब्रेड प्रोडक्ट जोटा कि आपण गोटे इंडस्ट्री आपण प्लास्टिक नेले आ गोटे इंडस्ट्री पोक नेले देन गोटे वेयर हाउस रे आपण ताकू असेंबल करले देन पुणी ताकू मेन मार्केट को छाडले सेटा होची वेट गेन करे कि आपण मार्केट रे सेलिंग करले आ वेट लूजिंग कोटा आपण रॉ मटेरियल आपण ये रो आतले माइंस रो आनिले माइंस रो आनला पर सेटू वेट रिड्यूस करले मींस डायरेक्ट आपण रॉ टिकू एक्सट्रैक्ट करले देन आपण प्लांट को नेले ओके वेट लूजिंग वेट गेनिंग इंडस्ट्रीज अछि बहुत सारा थ्योरीज अछि ज्योग्राफी रे जदि आपण नियंती तो ए क्वेश्चन डायरेक्ट आस्तला वेट लूजिंग वेट गेनिंग जो क्वेश्चन टी ये गत तर आछ थ्योरी दैट्स इट क्लियर हितो आसुतोष जो क्वेश्चन दिथिला यस सर एई परिभाब रे ताको हेल्प मिलुची फ्लोरिश करिया ओके सबले भाबी आपण गोटे ऑलरेडी हेई साचंती गोटे सिविल सर्वेंट हेई साचंती एंड ऑफिस रे बसचंती आपण को जस्ट गोटे आसिलो डाटा आसिला कि डिस्कस द डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस द एक्सप्लेन द पॉवर्टी इन रीजनल जो इंसिडेंस ऑफ ओडिशा डिस्कस द रिसोर्स ऑफ कंजर्वेशन पॉलिसी ऑफ ओडिशा आपण खाली जस्ट गोटे डाटा देबार अछि एग्जामिनेशन आपण को पेपर रे गोटे डाटा देबार अछि एंड आपण ऑलरेडी गोटे ऑफिसर हेकी बसचंती गोटे आसिला कि केस स्टडी आसिला एंड आपण ताको गोटे सजे की गोटे प्रॉपर मैनर रे लेखि कि गवर्नमेंट को सबमिट करिया अछि एठी गवर्नमेंट के एग्जामिनर एंड आपण होचंती एडमिनिस्ट्रेटर एंड जहां भी क्वेश्चन आसिला से गोटे फील्ड स्टडी बा फील्ड केस रो आसिला तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपण सेति की माइंड सेट कर नियंतु देखिबे ये गोटे साइकोलॉजिकल प्रोसेस ओके ट्रिक
जदि आपण सेतिकी भाबी नउचंती एफेरु जहाँ भी किछि आपण डाटा पढिबे आपण निजे एन्जॉय करके सेटू नोट्स लिखिबे रादर देन जदि आपण एस्पिरेंट्स भाबी कि नोट्स लिखिबे हडबडी रे एंड मते प्रिपेयर करियर अछि एही हिसाब रे जदि आपण एबेरु भाबी नउचंती कि हां मु ऑलरेडी गोटे ओएस ऑफिसर हेई सारिछि एंड मते जस्ट इंफॉर्मेशन गैदर करियर अछि मते निजुको स्ट्रांग करियर अछि बस सेतिकी भाबी नियंतु आपण को जहाँ भी पढिबे देखबे नेक्स्ट संगे संगे कैरी करिबो माइंड कैच करिबो सो एतिकी दैट्स इट आज रो क्लास इटी एंड करबा पुणी देखा हबो फ्राइडे रे तो फ्राइडे आपनकर ज्योग्राफी क्लास अछि ज्योग्राफी क्लास रे डिस्कस करिया बहुत सारा एमपी प्रोग्राम सब ओके